सीधा बोली। मांस खाले तो पेट टुनु है। केसरिया तेरा इश्क है पिया। सोचा था मेरा सपना पूरा करेगा। कुल वाली ना तारा कुला भांगी ना। बच्ची नहीं मैं सब समझती हूँ। बेस कैंप क्या होता है? ने अपने कमरों में खुद के घर बना लिए। Namaskar. Ladies and gentlemen, the moment that we all had been waiting for. National Film Awards 70th edition is here, brought to you by National Film Development Corporation along with Directorate of Film Festival, bringing you live action from here, the national capital, Vigyan Bhavan. I am joined in by my lovely colleagues Priyadarshini and Veronica. And girls, are we excited about it? Well, we are super excited and energy here is absolutely crackling. विज्ञान भवन में हर ओर ऐसा लगता है जैसे एक उत्सव का माहौल हो। हर आदमी एक्साइटेड है क्योंकि किसी के फेवरेट एक्टर को आज सम्मानित किया जाएगा, कुछ ऐसे टेक्नीशियंस को सम्मानित किया जाएगा जिसे कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं, लेकिन आज सब जान जाएंगे। 1954 से जो सफर शुरू हुआ था आज यहां तक आ गया है। ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां कभी नरगिस, उत्पल दत्त, कमल हसन, अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज सम्मानित हुए थे और ये फहरिस्त तो लंबी चलती ही जाती है, ये सिलसिला चलता जाता है। और आज यहीं पे विज्ञान भवन के प्रांगण में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। जी हाँ, मिथुन दा को तो पुरस्कारित किया ही जाएगा। साथ ही साथ अगर 70वें संस्करण की बात करते हैं तो इस बार ऋषभ शेट्टी, मणि रत्नम, AR रहमान जैसी कई नामी गिरामी हस्तियां हमें देखने को मिलेंगी। अगर संगीत की बात करें तो प्रीतम, AR रहमान, अरिजीत सिंह से भी हमारी मुलाकात होगी। और प्रियदर्शनी, रीजनल सिनेमा पे भी इस बार खास तवज्जो दिया गया है। वी टॉक अबाउट रीजनल सिनेमा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट Assamese मूवीज, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एंड हरियाणी also पंजाबी। वेल, जब रीजनल सिनेमा पूरे विश्व भर तक पहुंचता है, आई थिंक नेशनल अवार्ड इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो रीजनल सिनेमा को पूरे विश्व भर तक पहुंचाता है। उनकी सभ्यता, भाषा, खान पान हम जान पाते हैं। एब्सोल्युटली, आपने बात करी है रीजनल सिनेमा की, हर नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री की। वी आर कंट्री ऑफ ए डाइवर्सिटी और उसी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है। मेरा ख्याल है कि एक जर्नी हम देख लेते हैं कि किस तरह की जर्नी रही है ये सिलसिला जो 1954 में शुरू हुआ था नेशनल फिल्म अवार्ड्स का, किस तरह से इस साल तक पहुंचा है। India, the land where awe-inspiring tales and legends come alive. The epic Ramayana resounds in every home. India, the fertile ground of expression, where the Natya Shastra established timeless standards of storytelling centuries ago. This tradition shaped Indian cinema, guiding stories to evoke deep emotional and cultural resonance. In every frame, a tale unfolds, a journey of dreams in silver and gold. From whispers of the past to voices anew, Indian cinema, our story, our view. In 1913, Raja Harish Chandra, India's first feature film, sparked a revolution under the visionary Dada Saheb Phalke. By 1931, Alamara introduced sound, revolutionizing storytelling. The golden age of the 50s and 60s gifted us classics. With melodies from legendary voices, Indian cinema continues to enchant, proving its magic endures through generations. In 1954, Indian cinema transitioned from mere fame to enduring prestige. That year marked the beginning of a proud tradition, the National Film Awards. Not just awards, a legacy was born. The National Film Awards, a beacon of light, honoring filmmakers' creative flight. With vision, grit and hearts ablaze, the National Film Awards took center stage. A crown of glory, hard work's due, for dreams pursued and stories true. Behind the scenes, technicians strive, bringing films to life, keeping them alive. Every Indian heart, with hope aflame, longed to touch this realm of fame. In its early years, films set the tone, emphasizing depth and humanity. As the awards evolved, they embraced regional cinema, documentaries and experimental films, reflecting India's vibrant cultural mosaic.
Visionaries like Satyajit Ray redefined global storytelling, inspiring future filmmakers with his legacy of heart. The directors explored themes of caste, gender and social justice, amplifying voices often overlooked by mainstream cinema. The National Film Awards celebrated films showcasing the powerful blend of popular appeal and artistic value. By amplifying diverse voices, the National Film Awards allowed regional stories to resonate universally, proving that the magic of storytelling knows no boundaries. The National Film Awards stand as a defining force for cinema, a catalyst for cultural and economic growth. Cinema transcends language barriers, uniting us and enriching our collective dialogue, bridging gaps beyond regional confines and fostering cross-cultural appreciation. Through films, we shared experiences that shape our collective identity. More than entertainment, it becomes a powerful agent of change, addressing societal issues while celebrating the rich diversity of our heritage. And at the pinnacle stands the Dadasaheb Phalke Award, celebrating the visionaries who have shaped Indian cinema, honoring the pioneers and dreamers who remind us why we tell stories. As of this year, 54 Dadasaheb Phalke Awards have been presented, with the latest honor going to legendary Shri Mithun Chakravarti, acknowledging his remarkable contributions to the art of cinema. Today, Indian cinema stands tall, balancing tradition and innovation, celebrated like a festival, connecting regional narratives globally. It transcends frames and languages. It embodies laughter, tears, courage and hope. From celluloid whispers to silver screens, the National Film Awards become the ultimate dream. A tribute to art, to passion's quest, where cinema's finest are truly blessed. With us we have living legend Mani Ratnam जी, जिनको इस बार पुरस्कारित किया जा रहा है पोनियन सेल्वन के लिए बेस्ट तमिल फीचर फिल्म। सर, कैसा लग रहा है? इतने सारे पुरस्कार अभी तक जीत चुके हैं, पद्मश्री से भी आपको नवाजा गया है और आपकी फिल्म में हमेशा एक अलग टच रहता है, बट दिस इज डिफरेंट. व्हाट वाज द कंसेप्शन आइडिया? First, thank you for pronouncing Ponniyin Selvan correctly, and it's a very special film because it comes from a huge classic novel which has been popular for over 50 years and the most loved Tamil novel probably, and it's been a dream for me to do this project for I've been trying at least 3-4 times before, so I'm glad I got it. I'm glad that it's recognized and I'm getting a national award for it. How much effort it takes to bring a long history together, and that too if it is placed in a correct order? Yeah, in the sense, any film is difficult, and to do a historical fiction, the balance that he has achieved, Kalki has achieved in the book, you try to do it in a different medium, and so it's a challenge. It's something very different from what I've done before, so it is very exciting. Thank you so much and many congratulations once again on winning so many awards. Great. Thank you, sir. So टीम फौजा इज विद अस जी. हरियाणवी भाषा में फिल्म है और पहली बार बेस्ट डायरेक्टर डेब्यूटेंट मिल रहा है प्रमोद पुढ़ाना जी को. साथ ही नौशाद हमारे साथ है जिनको बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिल रहा है, और साथ ही पवन मल्होत्रा जी को कौन नहीं जानता. और सबसे पहले सभी को राम राम. जी बताइए, फौजा आपने फिल्म जो बनाई है फौजियों के ऊपर है, इसका सफर कैसा रहा? देखिए, हम सभी जानते हैं हरियाणा की धरती या तो किसानों की धरती है, खिलाड़ियों की धरती है या जवानों की धरती है. तो वहाँ ऐसे मतलब हर गांवों में ऐसे परिवार हैं जिनमें कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई बच्चा उनके भारतीय सेना में जाके भारत माँ भारती की सेवा कर रहे हैं. ऐसे ही एक जवान की कहानी है जिसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय सेना में अपनी सेवा देते आए, माँ भारती की सेवा करते आए हैं. उसी ही एक ऐसे जवान की छोटी सी बात पे बड़ी फिल्म है, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पवन जी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई. और आज हम इस छोटे से गांव से निकली ये कहानी इस राष्ट्रीय पुरस्कार तक पहुंची. मैं डीडी नेशनल चैनल का भी इसमें आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे सामने खड़े और हमारा ये
जी, नौशाद सदर खान जिनको बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिल रहा है, आप बताइए आपने क्या मानसिकता से इसके लिए गाने लिखे, क्योंकि इट्स अ वेरी टचिंग टॉपिक फॉर एवरी इंडियन। जी देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि देश प्रेम की बात जब हम करते हैं तो वो हमारी रग रग में है। देश के लिए लिखना, सेना के लिए लिखना अपने आप में एक खुशनसीबी की बात है। मैं तो कहूँगा कि मुझे इससे ज़्यादा काम करने के बाद सुकून कभी नहीं मिला। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत फिल्म है, सबसे खूबसूरत टॉपिक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे देश के लिए कुछ कहने का मौका मिला। तो आपने आई थिंक सब कह दिया इस बात में। पवन जी, आपको हमने बेहतरीन कैरेक्टर्स में देखा है, बट दिस फिल्म इज डेफिनेटली क्लोज टू योर हार्ट, यू हैव ऑलरेडी सेड दिस। मेरे दिल के पास है ये, और मैंने 40 साल में ये कभी नहीं बोला, और क्योंकि वक्त कम है तो मैं एक चीज साझी करना चाहूंगा। ये घड़ी पहनी हुई है मैंने, सालों साल मैंने घड़ी नहीं पहनी थी। अगर रुपए में इसकी कीमत आंकेंगे तो ये 1100 रुपए की है। और मैं वॉर मेमोरियल दिल्ली में गया, जो कि बहुत टाइम से प्लान कर रहा था, पर कुछ टाइम पहले ही टाइम मिला। और वहाँ जब सैल्यूट है सब मार्टर्स को, और फिर जब मैं वहाँ पर शॉप है एक सोविनियर शॉप, वहाँ पर है तो ये सिर्फ 1100 रुपए की, लेकिन ये इसकी कोई कीमत नहीं है। इसके ऊपर ये ध्यान से देखिए, इसके ऊपर जो लॉन्गोवाल बैटल हुई थी, जो आपने फिल्म देखी ना बॉर्डर, उसका, तो इसका कोई मूल्य नहीं है। और मैं क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया जा रहा है हमारे अपने मिथुन दा को। इज अ लिविंग लेजेंड, लेजेंडरी आर्टिस्ट। 350 से ज्यादा मूवीज में इन्होंने काम किया है, अपनी अदाकारी से पूरे भारत में अपना नाम रोशन किया है। मिथुन दा, कैसा लग रहा है आपको इस पुरस्कार से नवाजा गया, विच इज द बिगेस्ट ऑनर इन इंडियन सिनेमा? क्या बोलूं, देखिए अभी तक इसको ठीक से पिया नहीं, अभी तक मैं उसी खुमार में हूं, लेकिन इतनी बड़ी इज्जत, खाली थैंक यू बोल सकता हूं भगवान को कि थैंक यू वेरी मच। जितनी तकलीफें उठाई भगवान ने शायद सूद के साथ मुझे वापस कर दिया। आपका इतने दशकों का सफर रहा है भारत सिनेमा में, क्या कुछ बदलाव आपने देखे, और आज की जनरेशन से आपको क्या उम्मीदें हैं अगर सिनेमा की बात की जाए तो? देखिए, सभी कुछ बनना चाहते हैं और सपना तो सभी देखते हैं। मैं सिर्फ इन लोगों को यही कहूँगा, मुझे मालूम है बहुत से टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन पैसों की तकलीफ है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ना, आशा नहीं छोड़ना, सपना देखना नहीं भूलना। मिथुन दा, अभी भी आप काफी फिल्म्स में हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आने वाले वर्षों में मिथुन दा हमें कहां देखने को मिलेंगे? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कुछ प्लान नहीं करता हूँ। एज इट कम्स आई गो ऑन। आप डिस्को डांसर की वजह से काफी फेमस हुए हैं और पूरे विश्व भर में आपको जाना जाता है, आपके डिस्को मूव्स के लिए जाना जाता है। जब आपको एक खिताब दिया गया डिस्को डांसर का, वो किस प्रकार की फीलिंग थी व्हेन वी गो बैक इन टाइम? देखिए, फर्स्ट वीक में तो पिक्चर को फ्लॉप कर दी गई थी, क्योंकि उनको ये डांस समझ ही नहीं आ रहा था, ये कैसा डांस है, ऊपर उंगली कर रहा है। लेकिन जब लोगों को मालूम पड़ा कि कुछ दूसरे ढंग का है और उन लोगों ने उसको अपनाना शुरू किया, तो क्रेज बन गया, और क्रेज ऐसा बना कि अभी तक उसका चल रहा है। ये मूव अभी भी चल रहा है, ये मूव को कॉपी करके लोग बना रहे हैं। विदेश में तो इसका तो कुछ और ही बात है। अब से कुछ समय पहले आपको पद्मश्री से भी नवाजा गया, वो किस प्रकार, पद्म भूषण से नवाजा गया, वो किस प्रकार की फीलिंग थी? वो मुझे लग रहा था कि सभी को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे से भी छोटे हैं, उनको भी मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। फिर आखिर में मिला, और मिला तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं मिथुन दा। थैंक यू, थैंक यू। All right, so the environment here is only getting hotter and hotter at the 70th edition of National Film Awards, and I'm lucky to have Madam Khushbu with us, who is also a part of the award selection committee. A very good evening to you, ma'am. Very good evening. And what a pleasure to have you on the 70th edition of National Film Awards. Your thoughts on that? Really honored to be here. And it's always great to see people from my fraternity, from my family is what I say, to be awarded the highest awards what we see here at the national level. It's amazing to see the crowd. And obviously the kind of films that have been, you know, the entries and the final selection, it's been absolutely overwhelming.
totally overwhelming, because national award is something people are awarded where they think they rightly deserve. It's not something which ke chalo aaye mil gaya chale gaye. This is something what you rightly deserve, and as an actor or as a technician for that matter, you know, it's very important to pat them on their back and say that, oh, you have done an excellent job, because it actually pushes them to do something better the next time. And national awards is a very, very competitive, so everybody wants to win an award here. Absolutely, and how appropriately it is called the National Awards, because India is such a country of diversity, and you know, celebrating excellence of cinema through various languages, various cinema, it's such a great move. Yes, every other award is about, you know, there is a barrier, you break it, and then, you know, you divide it. But national award is something you say nationally. It's like you're the best in the country, and that is something which is really overwhelming. I know, ma'am, we all are very eager to get inside the auditorium, but just a little brief thought, if you could tell our viewers on Doordarshan, how difficult was it during this award selection committee? Because film after film, there were absolutely excellent films throughout the year. Yes, and we have some brilliant films all over the country actually this year, and we have to accept that we are the biggest filmmakers in the world. We churn out the best films, we churn out the maximum number of films, and we churn out the maximum moolah making films in the country, so in the world actually. So globally, when you are appreciated, it's nice to be here and part of this jury, part of the Dada Saheb Phalke jury, and see that you get to choose the best of the best. Thank you so much for talking to us, Khushbu ma'am. Enjoy the evening. Lovely talking to you. Thank you so much. Thank you. And Arun Bakshi sir is here with us, जो खुद एक बहुत ही चर्चित चेहरे हैं, अभिनेता हैं, वो जूरी मेंबर भी थे नेशनल फिल्म अवार्ड के. आइए उनसे जानते हैं, सर, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग दीज विनर्स? टेक अस थ्रू अ डे ऑफ अ जूरी मेंबर. देखिए, सबसे पहले बात यह है कि टू बी द जूरी मेंबर, नेशनल अवार्ड जूरी मेंबर बनना, जज बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ये था तो हमारे सर माथे पे था. एंड उसके बाद आता एक्सपीरियंस. आई हैड टू सी बिटवीन 80 to 85 फिल्म्स, एंड दैट वाज, आप देख लीजिए 25 से 30 दिन के बीच में हमने पिक्चरें देखी हैं. 4 फिल्में एक दिन में देखना, कभी कभी 5 फिल्में भी देखना बहुत ही बड़ी बात है. और फिर उसके बाद में माइंड अलर्ट रखना और उसको नंबर देना, कितना नंबर किसका है, किसका क्या परफॉर्मेंस कैसी है, फिल्म कैसी है, स्क्रीन प्ले कैसा है, डायलॉग कैसा है, म्यूजिक कैसा है, वो सारी चीज़ों को लिखना एक एक करके. इट वॉज अ हरकुलियन टास्क. आई एम श्योर सर. और ये इस बार रीजनल फिल्म्स ने बहुत ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं और काबिल तारीफ है ये बात. तो ऐसे में किस बात का आपने ख्याल रखा था? देखिए, रीजनल फिल्म जो है ना, वो भी तो फिल्म है. रीजनल फिल्म, उसमें आप अगर एनकरेजमेंट नहीं देंगे एक क्रिएटिव को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, और क्योंकि आजकल तो जो सरकारें हैं वो उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, अगर वो उनको एनकरेजमेंट मिलेगा और अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको पता है कि उनकी जर्नी के लास्ट में जाके उनको और एक उठान मिलेगा. You know, it's a really very big thing. I'm literally honored. Well, thank you so much, sir, for speaking to us. Let's go to Veronica. मेरे साथ हैं आटम मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर. आटम काफी जानी जा रही है अपने बेहतरीन निर्देशन के लिए. प्ले टाइप इसका स्टोरी टेलिंग की तरह से इसको निर्देशन किया गया है. तो आइए जानते हैं आनंद जी से और इसकी खास डायरेक्शन के बारे में समझते हैं. What was the reason behind creating a masterpiece like Atom? The reason actually was all the actors in the movie, all the theatre actors, all 13 of them. I have known them for 20 years, so they're all my friends. So that is how I wanted my actor Vinay Ford. He wanted them to come into the films. So that's how we started, from theatre to films. Ajit, if I'm not sure, you're a doctor turned producer. तो डॉक्टर से ये पेशा कैसे बदला आपने? No, I became a producer by accident. No, after, along with this, I did 4 movies. This is the second one I chose, and here we are. I saw their script. It was a fabulous piece of work. They had shot a small piece, from which I knew that from that point of time itself, it was very different, and very different. And it was not the normal filmmaking, so I just joined hands with them. आप दोनों को बहुत बहुत बधाई. 3 पुरस्कार जीते हैं. Once again, a very congratulations to both of you. Sounds like a surname. You?
So we have Neena ma'am with us, who has been awarded as the best actress in the supporting role for the beautiful film Unchai. Ma'am, many congratulations firstly. It was definitely a challenging role because of the kind of premise the film was set on. Tell us something about it. It was very special for me because for the past 30 years I've been in Bombay. I wanted to work with Suraj ji, and he called me and I couldn't believe it. And on top, I was acting with all very, very dhurandhar actors, from Mr. Bachchan to Barman to Anupam to everyone to Sarika. So it was a great experience, especially working with Suraj ji. So it's a very special film for me. I'm sure, ma'am. हमने आपको आपके second phase of acting career में बहुत different roles में देखा है. Is there still any one role which you wish वो मिल जाए तो मजा आ जाए? I think there are 3,000 more roles I want to do. And your final thoughts on being awarded as Best Actress in a Supporting Role for National Award? This is my 4th award, National Award, and I want more also. So I am very proud because National Award is National Award. Yeah, it's special. Well, thank you so much for speaking to us, ma'am. All right, so one film that has been the talk of the town ever since its release for its concept, for the way they merged mythology into sci-fi section, and I'm lucky to have the winner of the Special Effects Supervising Award, Mr. Jacob, with me. Many, many congratulations, Jacob. Thank you, Akshay. Thank you so much. And it has been an absolute privilege and to win the National Award for Brahmastra. It has been like a great team effort from my entire team. It was not an easy project by any means. And we do a lot of Hollywood films. And this was one of those films where we wanted to take the quality of VFX more than Hollywood, and that actually happened. And I think that's we have got lots of love from the audience for especially the visual effects part of it. And yeah, I think today we are here winning the national award, and it's really great. So thanks to my team and the entire company for the support. Jacob, we all know it's a difficult concept, it's a difficult theme to execute because clubbing mythology with the storytelling in the contemporary way, and it's very difficult. Was it did you get the feeling that you will actually win an award? Obviously not. Win an award, yes. We knew that we would win the award because we put our heart and soul in really making it, polishing every frame, every concept of it. And of course, taking the director's vision to the screen and letting the audience know that this is exactly what we want to convey, and the magical effects and all. Yes, there was a lot of hard work, and we were quite sure, not for the national award, but yes, all the rest of the awards for sure. Thank you so much. Many, many congratulations, Jacob. Lovely talking to you. Please enjoy the evening. You deserve every award. हमारे साथ हैं इस बार के संस्करण के सभी ज्यूरी मेंबर्स. आइए बात करते हैं तेंद्र जी से, मुर्तजा अली खान जी से, और साथ ही साथ रेखा जी भी हमारे साथ हैं. तो मैं आप सभी से ये जानना चाहूंगी कि इस बार क्या क्या चैलेंजेस आए एज अ ज्यूरी मेंबर. 2022 के अवार्ड हैं तो पोस्ट कोविड पीरियड था, फिल्में कम थी, लेकिन चैलेंज बहुत था क्योंकि टैलेंट बहुत सारे थे. रीजनल फिल्मों का पैनल बहुत स्ट्रांग था. हमने जब मलयालम की फिल्म अटम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना तो यूनानिमसली ज़्यादातर अवार्ड डिसाइड हुए. तो एक पैंडेमिक के बाद किस तरीके से सिनेमा इंडस्ट्री उभरी और कितनी अच्छी फिल्में हैं उसका ये शोकेस है. और कच्छ एक्सप्रेस जैसी फिल्म, अटम जैसी फिल्म और हिंदी में गुलमोहर जैसी फिल्म, उनको अवार्ड मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ इंडिया की बड़ी वोकलिस्ट बॉम्बे जयश्री, उनको सऊदी वेलक्का के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर मिला. तो मुझे लगता है कि हर मायने में बहुत ही स्तरीय चयन है और मुझे खुशी है कि मैं इसका जूरी मेंबर हूं. मुर्तजा जी, आपके पास आते हैं. जैसे कि सर ने बोला कि रीजनल सिनेमा काफी उभर के आ रहा है, क्या इसका कारण हो सकता है कि रीजनल सिनेमा को इतनी प्रेज मिल रही है वर्ल्ड वाइड? देखिए, इसका काफ़ी हद तक क्रेडिट तो मैं इफ़ी को दूंगा, इंडियन पैनोरमा को दूंगा, नेशनल फिल्म अवार्ड्स को दूंगा कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इंडियन सिनेमा का बेस्ट जो होता है वो हमें इन प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलता है. मैं अगर पिछले 4-5 साल की बात भी करूं तो इंडियन पैनोरमा रियली हैज़ बिकम द फेस, हाँ, तो बहुत कमाल का उसमें से टैलेंट निकल के आया. तो आज जो डिफरेंस था इन टर्म्स ऑफ कि बॉलीवुड की डोमिनेशन रहती थी और रीजनल इंडस्ट्रीज की बात करते थे, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन सिनेमा की, आज हम बात कर रहे हैं ट्रूली पैन इंडियन फिल्म्स की. सो कंप्लीट पैटर्न. रेखा जी, एक लाइन में अगर बोलना चाहें इस बारी की जो सिनेमा है, एक लाइन में अगर आप बयां करना चाहें. मैं ये कहना चाहूँगी, मैं नॉन फीचर में थी जूरी मेंबर,
और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये निकल के आई कि हमने ऐसी फिल्म को बेस्ट अवार्ड दिया है आईना को, जो आज के समाज में जो परेशानियां हो रही हैं, जो बच्चियां झेल रही हैं, उनकी कहानी को हम उन्हीं की जुबानी लेकर आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम एंड कांग्रेचुलेशन। और अब समय है बात करने का बेस्ट फिल्म इन असमीज की टीम से। हमारे साथ हैं कुलानंदिनी, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, एंड सुनील अग्रवाल। So Kulanandini, firstly tell us the name of your film and what does it talk about? The name of the film is Emuti Putti, which literally means fistful of fish, but it's actually a travel film which has been shot on an iPhone, and this is Northeast's first iPhone film, so to say, and it entails upon a journey of 3 women of 3 different generations and their hopes and aspirations and how they achieve their goals. Well, this is very interesting that it's shot on an iPhone, but what sort of challenges did you face and why did you think that this movie can be shot on an iPhone? I think content is king, right? Story comes first, and it really doesn't matter what medium you're choosing. It could be celluloid, it could be digital as well. So we took it up as a challenge to see if any story could be told through a medium which is very, very, close to us. Everyone uses phone nowadays, and it also is for the young people who would dreams of making a film someday, and if someday they would want to tell a film where they have like very minimal budget and if they have a phone to shoot, why not, Well, all the best to you for all your future endeavors. Thank you so much for speaking to us. All right, it is sort of a coup having these 2 wonderful people on the red carpet here at the 70th National Film Awards. Mansi Parakh, of course, winning the Best Actress for Coach Express. And obviously the director is also with us. Well, very, very congratulations to you, first of all. Thank you so much. Thank you so much. I was having a word with Mansi yesterday, but I'll begin the things with Viral and take his take on, his film. What's the feeling like? Did you get the feeling when you were making the film that you were going to inching towards a national award? We made the film with all the honesty, and somewhere kahin pe man mein tha ki ise nationals mein bhejna to hai, because we wanted to tell the world that regional cinema is also inching towards cinema. It doesn't matter whatever the language is. Yeah. So definitely. Mansi, your take on that. I mean, you are a seasoned actor. You looked upon so lovingly with all your fans. When Viral approached you for that film, did you realize that you are in for something really special? So I approached Viral for the film because I produced it also. So yeah, no, I was very happy because जब ये फिल्म आई ना हमारे पास, तब सबने बोला अरे तुम ऐसी फिल्म क्यों बना रही हो, क्योंकि इसमें तो फीमेल्स हैं 2 और फीमेल सेंट्रिक फिल्म कहाँ चलती है गुजराती में. पर हमको लगा नहीं यार, हम कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, जो रन ऑफ द मिल चीज़ें हैं वो करनी नहीं है. हम इसमें घुसे हैं एज आर्टिस्ट, प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कुछ अलग करना है. तो Viral absolutely came on board with his enthusiasm and his positivity, and we set the whole thing on fire. एंड हम जब बना रहे थे तब लग ही रहा था कि बहुत स्पेशल फिल्म है, और फाइनली जब अब नेशनल अवार्ड 1 नहीं 2 नहीं 3 नेशनल अवार्ड मिल गए, तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है हमारे लिए. Well, I'm not going to keep you waiting because the award ceremony is just about to begin. Viral, many congratulations to you too as well, Mansi. Lovely talking to you and looking forward to talk to you again and watch your film soon. Enjoy the evening. मेरे साथ हैं द एवर गॉर्जियस ब्यूटीफुल शर्मिला टैगोर, और गुलमोहर को इस बार कई सारे पुरस्कार दिए जा रहे हैं. शर्मिला जी, हाउ वाज योर कैरेक्टर, हाउ यू डिफाइंड योर कैरेक्टर इन गुलमोहर? Well, actually the director defined the character, but I was the kind of matriarch. मुझे बहुत फेवरेट फिल्म है ये, और and that's why I'm here to cheer for Rahul. I'm so happy क्योंकि डायलॉग के लिए भी मिला है और बेस्ट फिल्म भी है गुलमोहर, और है भी बिकॉज अभी भी लोग पसंद करते हैं, अभी भी देखते हैं, क्योंकि हर स्तर में, हर एज ग्रुप में ये बहुत पॉपुलर हो गया. बिल्कुल, क्योंकि जो भी जिंदगी में है, और माय रोल जो है, बिकॉज मैं सभी के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, और किसी को कुछ भाषण नहीं दे रही हूँ, कोई उपदेश नहीं दे रही हूँ, बट आई एम ऑब्जर्वेंट एंड माई डोर इज ओपन. दरवाज़ा हमेशा खुला है कि जब भी उनको कुछ कहना है मुझसे वो कहें, एंड माई ग्रैंड डॉटर डज. So I'm very happy with the film, and many congratulations to Rahul. His first film, huh?
बहुत बहुत हाँ। Also talking about the film, ये जो एक बड़ा गैप है between the change in the society, ये किस तरह इस गैप को फुलफिल करती है? ये जो एक कम्युनिकेशन की गैप है और लोग साथ भी रहना चाहते हैं और थोड़ा सा फासला भी ज़रूरी है, और ये जो एज ग्रुप, एक एज ग्रुप कुछ और जो सूरज और कावेरी का जो रोल है तो उसमें जो हो रहा है, तो ये एक कोई अगर बॉन्डिंग जैसा माय रोल, जो सबको साथ रखना, सबको समझना, ज़्यादा बोलना नहीं मगर सुनना है, सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक सब्र, एक सुनने की कोशिश, समझने की कोशिश करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अदरवाइज आजकल किसके पास टाइम है? सब अलग अलग शहर में रहते हैं, टेलीफोन होता है, कभी कभी वीडियो कॉल हो गया, तो मिलना भी मुश्किल है, सब मशरूफ़ है। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, बट अगर दिल है ना, जैसे मनोज जी बोलते हैं, अगर आप चाहते हैं साथ रहना तो आप साथ रहते, बिल्कुल संभव है। शर्मिला जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन। सीधा चलते हैं प्रियदर्शनी के पास, जिनके साथ है सूरज जी। बातें शर्मिला टैगोर जी की सुनी, और अब वक्त है एक और खूबसूरत शख्स से बात करने का, जिन्हें नवाजा जा रहा है नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन, सूरज बड़जात्या जी। सर, वेरी वार्म वेलकम। सर, हम बचपन से आपकी फिल्म्स मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, विवाह जैसे जॉनर की फिल्म्स देखते आ रहे हैं, बट ऊंचाई उन सबसे अलग है। ये फिल्म बनाने का आपने क्यों फैसला लिया, कब सोचा? एक्चुअली ये कहानी मेरे पास 2016 से थी और मैं ये बिल्कुल नहीं बनाने वाला था, क्योंकि ये मेरी कंफर्ट जोन से एकदम अलग है कहानी। मैंने कभी किसी स्टूडियो के बाहर शूटिंग ही नहीं की, हालांकि कभी गाने करने चले गए ऊटी वगैरह, बट जब पैंडेमिक का दौर आया तो हर जगह एक उदासी थी, एक फियर था। तो उस समय मुझे लगा कि एक चैलेंज ज़रूरी एज अ फिल्म मेकर, तो मैंने वो सब्जेक्ट उठाया जो उस समय मुझे लगता है कि ये चैलेंज, और कहानी लिखी 3 महीने में, स्क्रिप्ट लिखी पैंडेमिक में, पर मेरे सामने था कि इसके लिए फिर एक्टर्स, तो फिर मैंने बच्चन सर को फ़ोन किया, महीना भर लिया उन्होंने, और फिर जब उनका हाँ आया फिर उसके बाद से शुरू हुआ। बट सर, द कास्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, चाहे वो बमन सर हो, अमित जी हो, या फिर अनुपम सर, नीना मैम, इतने दिग्गज कलाकार सब एक साथ। लेकिन ये भी सच है कि वो सभी एक उम्र दराज कलाकार हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके साथ उस ऑल्टीट्यूड पे जाके काम करना, हाउ चैलेंजिंग वाज दैट? इट वॉज, अगर देखा जाए तो किसी भी डायरेक्टर के लिए ड्रीम टीम है, और कई बार मैं कहता हूँ कि मुझे तो 350 इयर्स का एक्सपीरियंस मिला है, सबका मिला है तो, एंड मतलब बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोग तो 9 बजे शूट होता था, 11 बजे पैकअप, 6 बजे तक करें क्या, बिकॉज वन टेक से ज़्यादा कभी हुआ ही नहीं किसी शॉट का। और चैलेंजिंग ज़रूर था, क्योंकि सब इतने उम्र और सबको इन हाइट्स पे ले जाना, और पैंडेमिक में हमारे साथ डॉक्टर्स चले हैं, हम लोग चॉपर में गए हैं, रोड्स बनाई हम लोगों ने, सीढ़ियाँ बनवाई पकड़ने की, बिकॉज हम ऑल द टाइम हमारे ध्यान में ये था दैट फाइनली दे आर वेरी सीनियर, बट हैट्स ऑफ टू देम, एक चले घंटों चले। वेल, थैंक यू सर फॉर गिविंग अस होप फ्रॉम योर मूवीज, थैंक यू सो मच। और अब समय है जाके मिलने का KGF की टीम के साथ, जो है अक्षय के साथ। Ladies and gentlemen, one film, Kartikeya 2, that has won the best film in the Telugu language. Obviously, the team is with me. I've got the producer, Mr. Abhishek, with me, the director, Mr. Chandu, and the lead actor, Nikhil, with me. And what a pleasure. We've been chatting about the film, how well it's been received nationally, how overwhelmingly it's been loved by all the people unanimously. Let me go across to Abhishek first, and as a producer, your take on that. Many, many congratulations, first of all, winning the national award. Thank you, sir. Thank you so much. I would like to thank all the audience and National Wide Media for supporting Kartikeya 2. And Nikhil, before I speak to Chanduji about the film as a director, your take as an actor, obviously you've been loved by people unanimously. Sir, I'm very happy, sir, because the division between North Indian film, South Indian film, East, West has all been blurring nowadays, and we only have Indian cinema. And I'm very proud that Kartikeya 2 was one film that made every Indian come together. So we really want to thank the audience, thank the government of India for giving us this boost of energy, and I hope that this propels us to do more and more good films like this. And I just want to say thank you to the audience too for giving such a huge blockbuster and the award too. It's been a hot afternoon. Just a final word with Mr. Chandu about the director. How's been the response, and many congratulations to you also winning the film. Yeah, thank you very much. And in India,
in any trade, it's the highest honor to receive award from President. So we are very happy and thanks, and this gives us a motivation to do more good films. Thank you. Enjoy the evening. Thank you so much for talking to us. And Karthikeya 2 is absolutely brilliant. We are looking forward to have many more films from you like that. Thank you so much. कास्ट एक्सप्रेस ने इस बार के नेशनल अवार्ड्स में कई सारे पुरस्कार जीते हैं, उसमें से एक है कॉस्ट्यूम डिजाइन का। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कास्ट एक्सप्रेस की अगर खासकर बात करें, वो साड़ी के साथ जूतों का आइडिया आप ही का था? Of course it was a mutual idea because very first time this you know ये जो भी औरतें हमने दिखाई थी वो पहली बार घर के बाहर जाके काम करती है, तो the man who was helping him and he got the shoes for everyone, so yeah. तो कॉस्ट्यूम कहीं ना कहीं फीमेल ऑन द गो को दर्शाता है। It is. कैसा लग रहा है नेशनल अवार्ड जीतने पे? बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फील हो रहा है बिकॉज यू नो इट इज़ अ वेरी माई फर्स्ट अवार्ड, सो आई एम लाइक आई डोंट नो दिस फीलिंग, दिस नर्वस, टचिंग द स्काई। ग्रेट, congratulations. We go to Priyadarshini for the next interview. Well, we have a team of it's a film about a girl who through silence and ambience we try to portray a whole emotion of her, so it's well beautifully portrayed. And your thoughts on winning national award for this beautiful film? yeah, we never expected this came out of nowhere, so we're really happy, and I think we would like to thank every even cast who was there in the film for this film. Thank you. All right, so the man you see on the camera is someone, as they say, needs no introduction. The man who's been the talk of the town is the apple of eyes, and I loved his film Kantara, and this year's on the 70th National Film Awards. It has won 2 awards, winning the best film for providing wholesome entertainment and also winning the best actor. First up, Rishabh, many congratulations. Thank you so much. Thank you. Well, we've been talking about it, we met you before as well, but right now you're just moments away from getting into the auditorium, getting this award from the first citizen of the country obviously means a lot. Definitely बहुत खुशी होता है, and एक नहीं दो आ रहे हैं. So लास्ट फिल्म में भी ऐसा ही हुआ था, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म आया था, उसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों में ही था, सो अभी 4 हो गए. Well, you are absolutely, you know, a very famous person post Kantara. We loved the film, but generally speaking, you know, the film has, you know, had that special niche with every Indian audience. Did you understand, did you kind of make it while making the film, did you get the feeling that you are making something very special? हर फिल्म वैसा ही होता है, लेकिन ये हमारा दैव के बारे में एक फिल्म था, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था फिल्म में. सो आई ऑलवेज फेल्ट मोर रीजनलिस्ट, मोर ग्लोबल करके. सो वो एक कोर रीजनल रूटेड कंटेंट हर जगह वो कनेक्ट होता है, वो एक बिलीफ था. लेकिन इतना बड़ा होता है वो मेरा इमेजिनेशन में नहीं था कि एक कन्नड़ा फिल्म करने का एक आइडिया था मेरा, वही किया था. लेकिन बाद में जो वो लोगों ने दिया है, सो डेफिनेटली खुशी होता है. सो हर फिल्म में वही सेम एफर्ट होता है. Well, Rishabh, the kind of place that you have made in people's heart through your films, particularly Kantara, is beyond words. It's ineffable, but many congratulations to you. It's really hot out there. We won't keep you long here. Please enjoy the evening and receive your award. Thank you so much. Thank you. हमारे साथ है मनोज बाजपेयी जी, गुलमोहर को पुरस्कार मिल रहे हैं, शर्मिला जैसी भी बात हुई, और मनोज बाजपेयी जी का ये 4था पुरस्कार है. सर, आपका ये किरदार गुलमोहर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, अरुण बत्रा का किरदार बड़ा कमाल का है कि वो जिस परिवार में वो पला बढ़ा है, अचानक से उसको लगता है कि ये परिवार उसका नहीं है, लेकिन वो ऐसा आदमी है जो परिवार से जुड़ा हुआ आदमी है और परिवार का बड़ा महत्व उसके दिल में है. और जब अचानक से उसको लगता है कि ये परिवार कहीं से भी उसको अपना नहीं मानता है, वो जद्दोजहद शुरू होती है. ये गुलमोहर, अगर मैं फिल्म के बारे में बताऊं तो ये परिवार के महत्व को जो है आगे रखती है. आजकल के आधुनिक परिवार को, खास करके जब परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और जब परिवार टूट रहा है तो कैसे संबंध पूरे तरीके से ख़त्म हो रहे हैं, और आधुनिक समाज में परिवार का महत्व क्या है और कैसे उसको उसके महत्व को इसमें दर्शाया गया है. मनोज जी, बहुत शुभकामनाएं. कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ गुलमोहर फॉर दिस अचीवमेंट. थैंक यू.
We have Best Thiva Films winner with us on the red carpet. Welcome and many congratulations. Please tell us about your movie. What is it based on? Yes, it's based on a teacher's life. It's based on an education system in Thiva village. And we are so happy that we received national award. And this time, this is the first Thiva film which got the national award, feature film. And yes, and 99% the actors they just acted from that village only, and it is based on Assam. And yes, that's I'm very grateful for national award. So we received national award. Yes, and the English title, we have one English title also. The If Only Trees Could Talk. That is. Thank you so much for speaking to us. और चलिए बात करते हैं प्रसून जोशी साहब से जो अक्षय के साथ हैं. All right, so the 70th National Film Awards here on the red carpet. With me is Mr. Prasoon Joshi, who is such a popular face and man needs no introduction. I, as a student of literature, believe that poetry is the highest form of art, and talking to a poet is an absolute honor. Pleasure. It's really great for me to be with you here. And I know you come from a family of, writers yourself. So I think it's a pleasure talking to you. Absolutely, I'm doubly excited, sir. And as a poet, आप हर तरह के genre touch करते हैं हमारी country और खास तौर से national awards. उसी चीज़ का एक symbol है कि किस तरह से कि इंडिया की diversity को, Indian cinema की excellence को हम celebrate करते हैं. And you as a poet, your take on that, sir? See, I feel that the kind of diversity we have in this country, and the kind of diversity we see in our cinema here, I mean, if world comes and really sees that, their concept about how to deal with diversity will change, because we know it's in our ethos to deal with it. So because we respect, and our cinema reflects that. If you see a cinema, it's a manifestation of what we are. And I'm very happy that our juries who have tirelessly worked on the national awards and the entire team has selected some wonderful films which are very, very truly representing the diversity of our country. I think that's a great joy for me to see real cinema getting real award. Well, only a poet can understand that thing, and it's been a pleasure talking to you, Prasoon, sir. It's been really hot. We won't keep you long out here on the red carpet. Please go inside the auditorium and enjoy the evening. मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप जो दर्शक हैं अवार्ड्स को देख रहे हैं, अवार्ड्स को देखें भी, और फिर इन फिल्मों को अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देखने की भी कोशिश करें. Absolutely. Thank you so much for talking to us, sir. मेरे साथ हैं गुलमोहर के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर राहुल जी और विक्रम जी. शर्मिला जी अभी बता रही थी कि कितना खूबसूरत निर्देशन है, तो राहुल जी से जानते हैं ये जो आइडिया था, ये कंसेप्ट कैसे आया आपके मन में? As filmmakers, we are very privileged to indulge in topics that we can explore. And मैं उस दौर से गुजर रहा था जब मेरी वाइफ और मैं we were pregnant और हम अपना खुद का घर खरीदना चाह रहे थे. तो I was just wanting to explore the meaning of family and home, because meanings keep changing with time as we move forward, but weirdly family is such an important thing that you need people around you. And when we see nuclear हो रहा है सब, तो ये काफी जरूरत है. एक लाइन में आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है पुरस्कार जीतने पे? बहुत अच्छा. कैसा लगेगा? नेशनल अवार्ड मिल रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो मैम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है. यूनिक मोमेंट. कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं. अब हम चलते हैं प्रियदर्शनी के पास जो बात करेंगे A.R. रहमान से. And we have the legendary A.R. Rahman here with us on the red carpet along with the very gorgeous Nitya Menon. Well, sir, very warm welcome firstly and many congratulations. So many awards, so many accolades you have won. What does still a national award mean to you? This one seems like a full circle, because the first national award was with Mr. Mani Ratnam, and this again with Mr. Mani Ratnam. And whenever I work with him, it's worthy kind of stuff, and I'm very proud of it. He's also here. Yeah. Nitya Menon is here. So. Yes, and we would also want to know about your particular role, because it just got appreciated a lot. Tell us something about what did you prepare it like? Well, honestly, it's not about preparation. It's about understanding the role and being natural in it. Right. So, yeah. Okay. Well, getting recognized at national level, getting a national award. Any thoughts on this?
it's absolutely special for me. It's my first time, and I feel like it's a validation of everything that I've done until now. So yeah. Well, any new work of yours, which all of us, the audience, is eagerly waiting for, any new work of yours, please tell us about that. There are plenty of films that I'm doing Any particular all one together. you're really looking forward to? Yes, I am doing another film with Dhanush. This film with Dhanush is the one I got National Award for. So I am looking forward to the other film. Well, thank you so much for speaking to us. And Rahman sir, thank you so much for speaking to us. With us we have the stunner, the very gorgeous Amy Barua. Amy, namaskar. Many congratulations to you on winning your 3rd national award. Talking about Birubala, which has got you this award. What was the idea behind Birubala? Actually, you know, I always wanted to focus on Northeast, and I want to show the untold stories of Northeast. So, Birubala ji जो है असम की एक बहुत जाने मानी लेडी है, ट्राइबल लेडी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी इशू विच हंटिंग जिसको लेके पूरी दुनिया में छा गई है. उनको एक गांव से निकल के उनको पद्मश्री मिला, और बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क. तो उनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री है, उनकी पूरा जर्नी जो है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बिरूबाला जी के लिए मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, और मुझे लगता है कि ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये बिरूबाला जी का है. आज वो हमारे बीच नहीं रहे, तो लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि बिकॉज ऑफ हर आई एम गेटिंग दिस. Many congratulations, and once again you are looking stunning with your mekhela. This is my traditional wear, mekhela chador. This is Riha. Great. Thank you and congratulations. On the red carpet at the 70th National Film Awards, there's people who need no introduction. Brahmastra has been the talk of the town, and the director of the film, Ayan Mukherjee, and the producer, Mr. Karan Johar, is here with us. First up, many congratulations to you, gentlemen. Thank you so much, Akshay. Thank you. Thank you. It means a lot, and we are here on the 70th National Awards, and it really is very illustrious, very prestigious, and we are very honored and humbled to be here. Karan sir, I was just talking to Mr. Jaikar, who is the supervisor for the technical and special effects, winning the award as well, and rightly so. And how difficult was it, you as a producer, when you decided to execute something like Brahmastra, you know, clubbing mythology with the contemporary storytelling? Was it like challenging, very different from your usual style of making? I can take absolutely no credit for the special effect, the VFX component of Brahmastra. It's entirely Ayan Mukherjee's brainchild, his baby, his vision. He created the world, and Prime Focus and Dean Egg really collaborated to kind of achieve it. I'm here actually to clap loudly, support them, and of course very humbly accept this honor. But it really is, you have to ask him this question. And obviously we watched Wake Up Say, then now Brahmastra, this whole evolution as a director. You've been a person like that, or you were just waiting for the opportunity, or it's just a natural progression as a director? I guess as you go along your life, you tend to grow, different ideas, different things capture your mind. So it happened very naturally, I guess, in my life. And making popular films and receiving this award, obviously, you know, getting it from the first citizen of the country is always a privilege. And as a popular filmmaker, did you keep that in mind, or you just executed it with the flow? I mean, very honestly, I think like when you make a film, you're not really thinking about awards per se, but it's a huge honor, and of course feels wonderful when you receive an award. So yeah, it feels great that the journey has led us here. I'm very excited for Pritam Da and Arijit as well, who have won for Brahmastra. I think we're very excited that the music has been so richly awarded. The whole team deserves kudos. You've been absolutely sensational. It's been really hot. We won't keep you waiting. Please go inside, enjoy the evening, and many congratulations to you. See, National Award is given in 3 categories: feature, non-feature, and best writing. So we have a jury member from the best writing team here telling us how is the selection process, because it's a beautiful book on Kishore Da. Tell us something about it. It is a beautiful book on Kishore Da, as you said, is right, because we had a team of people who are learned and who are author. I myself is an author. So I guess people who read book and people who are kind of, you know, writing about cinema, they have chosen that, the committee member has so chosen those people to kind of, you know, pass the judgment or be the jury. But it was very tough because, you know, books come from all languages, from Malayali to, you know, Tamil, Telugu, Bengali, Manipuri, Assamese. All beautiful books, beautifully written. It is tough to take a call on, but yeah, I mean, it was two awards which we had to kind of give on best writing, which went to Deepak Dua, I think, and Kishore Kumar, and I think it's a twin winner. It's a joint winner, and
And Kishore being so popular and Kishore Kumar being one of the most iconic figure of Indian cinema, I think it was an interesting read, and it was an overall understanding of Indian cinema. Because But basically, what do you pay attention to? The form of writing, the art of writing, or the content, the thought behind it? all of it, what you have said, because the form, the writing, the flow, and how engaging it is. Because, you know, a book is something which needs to engage you, and it is not a audio-visual medium which can otherwise engage you with the audio and the visual. So it's just the words that has to engage you. So it's a tough call. So I guess, yeah, I mean, it's something which engagement is in the priority. Of course, the flow and the language. Well, take us through that journey, you know. How is it? It's a reader's room, like everybody's reading, writing remarks, or are you guys given the books well in advance and then you come back with the feedbacks? We are given the books well in advance, and we read at our pace, because it is not possible for us to kind of sit in one room and read those many number of books. And of course, there is language barrier where we like I'm Bengali and I can read Bengali, Hindi, English, and Marathi. So I take care of those languages, and other jury members would take care of other languages apart from the English. So then we all come together and we discuss the other language books, that what is important or what we missed out on the other language. So it's a very interesting meeting, discussion, knowing other authors, what's playing in the mind. So it's an overall, it's a brilliant experience. I'm sure all the intellectuals getting together, brainstorming. Well, thank you so much for giving us a peep inside that room. Thank you. Thanks. अक्षय, बहुत सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू हो चुका है, कईयों का होना बाकी है. अब तक का ये सफर कैसा चल रहा है, क्या क्या आपको जानने को मिला? Veronica, what do I say? It's almost, I'm speechless, because the experience has been absolutely overwhelming. Because हम फिल्में देखते हैं, उसको as a fan lover हम जब देखते हैं फिल्मों को बहुत enjoy करते हैं, entertain करते हैं, लेकिन जब उनसे बात होती है तो पता चलता है कि कितनी मुश्किलात उनको महसूस हुई है, कितनी उनको फेस करना पड़ा. मूवी को बनाने के पीछे कितनी स्ट्रेंथ लगती है, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन, मेकअप, कॉस्ट्यूम, so many things one put together. In fact, I was just talking to the team of Karthikeyan too, Veronica, and you know, the kind of details that they were divulging, they were talking about it, mythology, and obviously it's very difficult theme to execute. की बात हो, ग्राफिक्स की बात हो, कॉमिक, ये सभी कैटेगरीज में, और रीजनल सिनेमा इतना बेहतरीन हो रहा है. बट अभी चलते हैं प्रियदर्शनी के पास. शी हैज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Over to Priyadarshini. हमारे साथ हैं सिद्धार्थ दीवान साहब, जिन्हें बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए अवार्ड दिया जा रहा है फॉर शॉर्ट फिल्म. टेल अस समथिंग अबाउट दैट फिल्म फर्स्टली टू बिगिन. Actually, the film was made with a friend, Kaushik Sarkar. He is also getting an award for best script. And for us, like, we were making a short film, just creating something together. The agenda was never to make a film which will be sent to festivals, and we were just trying to get together, and you know, we were his children were acting in it. We were shooting in his house, and it was just, you know, something where two artists just get together. Well, take us briefly through the storyline of it. The story is of you know, like a household where you feel that there's something missing. There used to be someone in the household, you know, a family member who's on the older side, because you see these motifs of wheelchair and everything, and this this daughter who's like very aloof and, you know, missing something, and you get to know that you know, there's some sort of a loss, somebody died or something. But अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ऐसा सब्जेक्ट जब आप चुनते हैं तो फिर उसमें कैमरा मूवमेंट क्या रहनी चाहिए, फ्रेमिंग क्या रहनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? So this was a very different experience, क्योंकि यहाँ पे मैं उसी के बच्चों के साथ फिल्म कर रहा था, and they are not professional actors, so a lot of my job was to keep myself that feeling कि मैं वहाँ हूँ ही नहीं. So a lot of the design came from being almost just capturing, you're just capturing and letting them just feel their space and be there, and you know. Well, it already sounds very beautiful. Thank you so much for speaking to us. Thanks. मेरे साथ है बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट श्रीपद पीके, जिन्हें मल्लिकापुरम के लिए पुरस्कार दिया गया है. तो श्रीपद, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट रिसीविंग दिस अवार्ड? Very nice. I didn't really think that I will get it, so I'm so happy. From a TikTok star to winning national award, what is your journey like? As a parent, आपका क्या किरदार रहा? How your role as a parent in this? TikTok helped him to very lot to act. So now we are very happy to get this award.
So thank God, and and also we thank to Team Maligapuram. We never expect this award, so thank you God. And that's his movie Maligapuram, and it is all about Ayyappan, the God Ayyappan. So we all thank it now to the Swami Ayyappan. Shripat, can you say one favorite dialogue from the movie? Your favorite dialogue? Yeah, in Malayalam, no? Yes, yes, of course. തുളസി പിപി വരുന്നോ ശബരിമലയ്ക്ക്? थोड़ा सा, little longer. Any dialogue, any dialogue. Okay, great. Congratulations once again on winning this award. We are going to Akshay now. ऑलराइट दोस्तों, फिल्में देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, काफ़ी एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक फिल्म क्रिटिक की नज़र से फिल्मों को देखना, उसके लिए आपको एक स्पेशल आई की ज़रूरत होती है। और मेरे साथ इस साल के विजेता हैं, स्वर्ण कमल विजेता मिस्टर दीपक दुआ, जिनको बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड मिला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, बहुत सालों से आप इस फील्ड में हैं, फिल्में देख रहे हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को दूरदर्शन पर किस तरह के एस्पेक्ट्स को, किस तरह की वो मेटिकुलस नजर है जिस तरह से आप एक फिल्म को एनालाइज करते हैं। देखिए, जब हमने पत्रकारिता का काम शुरू किया था और ये तय था कि फिल्म पत्रकारिता में जाना है, तो उस समय कोई इस तरह से सिखाने वाला नहीं था। तो धीरे धीरे ये नज़र विकसित होती गई, हम अपने सीनियर्स को पढ़ते गए, फिल्में देखते गए, बहुत सारी फिल्में खराब अच्छी और बहुत सारा पढ़ना, खराब अच्छा दोनों किस्म का। तो धीरे धीरे नज़र विकसित होती है और ये समझ में आने लगता है कि किस तरह का सिनेमा खराब है, किस तरह का सिनेमा अच्छा है। और हमारा जो मेन काम रहता है फिल्म बनाने वालों और फिल्म देखने वालों के बीच में एक पुल की तरह, कि हम उनको ये बता पाएँ कि देखिए आप ये फिल्म देखें तो क्यों देखें और ना देखें तो क्यों ना देखें। और जहाँ फिल्म बनाने वाले अगर हमारे रिव्यू को पढ़कर कुछ ये समझ पाएँ कि कहाँ कमी रह गई या कहाँ उनसे अच्छा बन गया, तो ये हमारी सार्थकता है। इसके बारे में एक लंबी चर्चा की जा सकती है, बट दोपहर काफी गर्म है और अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है। दीपक जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू चैट विद यू मोर एंड मोर, बट प्लीज फॉर नाउ एंजॉय द इवनिंग एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अवार्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Well, we have Preetham with us on the red carpet. Many congratulations for your first ever national award. How does it feel? Very good. I'm feeling very good. And my mom and my wife is with me today, so I'm just, they're very excited. See, Brahmastra was a very different kind of a movie. As cine watchers also, for us it was a delight. What was the process like creating a music? Well, it was a, the movie only had a lot of special mysticism in it, so we had to keep the commercial balance along with that to keep the spirituality of the movie also, what the script demanded. Yes. So I think creating the balance was a exciting part of it, and everybody enjoyed it, so I'm happy. Preetham da, I just cannot let you go without just humming one line for us, because viewers are so looking forward to that. केसरिया तेरा इश्क है पिया, यंग जाऊं ये तो हाथ लगाओ, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, चैन सारी तेरी खैर मनाऊं। Well, thank you so much. It was such a pleasure. Thank you. अक्षय, एक वेव्स के बारे में भी काफी सुनने को मिल रहा है, ये वेव्स क्या है? Well, I tell you, it's a very, very important development as far as the Ministry of Information Broadcasting is concerned. We are going into every nook and corner, almost 27 nook and corners of the country, with a reality show kind of format where we will kind of pick real talents, जिनके पास कोई रील्स है, कोई स्टोरी है, अपने आप को वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो वेव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विच इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 में इसका ग्रास रूट लेवल से टैलेंट पिक किया जाएगा। अगर आपके पास भी इस प्रकार का कोई टैलेंट है तो वेव्स में अपने आप को एनरोल करें, और जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि फरवरी में इसका फिनाले किया जाएगा। तो स्किल्स अगर आपके पास भी हैं तो एक अच्छा मौका है अपने उस टैलेंट को पूरे विश्व भर तक ले जाने का।
Veronica, I was just chatting with Deepak Dua, the film critic who has won the Swern Kamal Puraskar this year, and उनसे साथ बात करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि जिस तरह से हम फिल्म को देखते हैं एक एंटरटेनमेंट के तौर पर, लेकिन एक फिल्म क्रिटिक जिस नजर से देखता है, जिस मेटिकुलस निगाह से फिल्म को ऑब्जर्व करता है, वो एक पूरे सोशल ट्रेंड का जो ट्रांजिशन होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, हम अभी फिलहाल हम चलते हैं प्रियदर्शनी के पास। विशाल भारद्वाज आ चुके हैं हमारे साथ। ओवर टू यू प्रियदर्शनी। वेल, रेड कार्पेट वेटरन जो हैं विशाल भारद्वाज सर आज हमारे साथ हैं, जिन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिल रहा है नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में। सर हमें बताइए कि देखिए आपको इतने नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, इतने सम्मान मिल चुके हैं, पर फिर भी जब नेशनल अवार्ड अनाउंस होता है तो क्या फीलिंग होती है? एकदम वैसा ही लगता है जैसे पहली बार मिला था, और इससे बड़ा अवार्ड क्योंकि हमारे देश में कोई नहीं है, इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं है, और जब ये मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। उस खुशी को एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता, ऐसी होती है। सर ये फिल्म बहुत अलग थी, एक म्यूजिकल भी थी, आईफोन पे इसको पिक्चराइज किया गया था, इसको शूट किया गया था। तो इंडिया में वैसे इतने म्यूजिकल्स का दौर नहीं है, लेकिन इसमें क्या स्पेशल था कि आपने इसको बनाया भी, और म्यूजिक डायरेक्शन में क्या स्पेशल? क्योंकि इसको एक जैसे म्यूजिकल फिल्म्स का जो एक जॉनर होता है, इसको वैसे कंसीव किया गया था कि जिसमें कि डायलॉग्स भी सारे अंग्रेजी में हुए थे, इसमें सॉरी उसमें म्यूजिक में हुए थे जी। पर सर फिर आपने इसको नॉर्मल फिल्म की तरह, अच्छा चलिए धन्यवाद। तो रेड कार्पेट पे हम आपके साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अक्षय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक जो आपने इंटरव्यूज किए हैं, आपका बेस्ट इंटरव्यू कौन सा रहा? Honestly speaking, I tell you, Veronica, it's very difficult to pick one, because with every passing interview, it was an eye-opening experience for me. Because चाहे मैं मिस्टर जैकर से बात कर रहा था, जिनको स्पेशल इफेक्ट सुपरवाइजर के लिए मिला ब्रह्मास्त्र के लिए, चाहे मैं कार्तिकेयन 2 की टीम के साथ बात कर रहा था, जिन्होंने मिथोलॉजी को बिल्कुल एक अलग ट्रीटमेंट दिया है, या बाकी सब चीजें, इट्स सच एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज ग्रेट। जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी, रीजनल सिनेमा को इस बार काफी तवज्जो दिया गया है। ब्यूटीफुल असमीज मूवीज, ब्रिलियंट प्रोडक्शन, आई थिंक डायरेक्शन, प्रोड्यूशन, सब कुछ बेहतरीन है। Absolutely, and film after film, National Film Awards 70th edition, getting bigger and bigger with every passing year. This year is almost humongous, you know, and these awards are special. I was talking to Mr. Karan Johar also. He mentioned that, you know, receiving it from the first citizen of the country I is think we always are all special. set to go inside the ceremony. Let's go inside. अंदर क्या चल रहा है ये देखते हैं। Over to Mamta Chopra and Debandu Ghosh. सामान ले ले अपना, सामान ले लो अपना, मैम चलो चलो चलो। सर इधर पुलिस to you conferences, business events, exhibitions, media and content marketplace, skills and talent showcase and cultural extravaganza to celebrate the vibrant diversity and technological prowess of India's media and entertainment industry. Hello, check. The ceremony is going to start in a short while. What are your expectations today? Well, I am just looking forward to watch these awardees take their award and, you know, feeling their moment. It is a thrilling, it's a very exciting experience, and someday hopefully we will also be there. But it is such a moment of inspiration for all of us, reflecting the diversity of the country. And as you rightly mentioned, Veronica, कि किस तरह से हर nook and corner से country की हर तरह की language को हमने acknowledge किया है, उनको ना सिर्फ award किया है बल्कि उनकी फिल्मों को एक platform दिया है, जिससे हमारे लिए भी एक एक्सपीरियंस हुआ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे पोनियन सेल्वन के संगीत की बात हो, उसके डायरेक्शन की बात हो, खासकर हिस्ट्री की बात हो, हिस्टोरिक मूवीज काफी आ रही है, माइथोलॉजी का भी एक शानदार ब्लेंड देखने को मिला है, केजीएफ जैसी धमाकेदार मूवी, स्टंट, कोरियोग्राफी, एवरीथिंग। ब्रह्मास्त्र को भी अवार्ड मिला है और एक नहीं कई पुरस्कार मिले हैं। Absolutely, and also along with these humongous big scale films, you also have to see a film like which won the best animation film, The Coconut Tree, or a such film a brilliant like masterpiece. absolutely Also Birubala, I would say, एमी बरुआ की डायरेक्शन है, पद्मश्री, और किस तरह
सिनेमा का पर्पस केवल एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है. सिनेमा हैज ऑलवेज बीन एक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द सोशल इश्यूज दैट हैज बीन प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, चाहे वो डोरी की बात हो, विडिज्म की बात हो या किसी भी प्रकार का सोशल इश्यू हो. तो बीरूबाला की खासकर बात करें तो विचहुड जो एक पुरानी प्रथा रही है, कितनी सारी विमेन इसके चपेट में आके उनके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है. तो बीरूबाला इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूवी एंड ब्रिंगिंग अबाउट सिनेमा लाइक दिस इटसेल्फ इज एन आर्ट. बिल्कुल सही बात की आपने यहाँ पर वेरोनिका, क्योंकि आपने बीरूबाला की बात की और नेचुरली हम सब जानते हैं कि नित्या मेनन और मानसी पारेख को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर उन्होंने पोर्ट्रे किया है. तो ये दर्शाता है नेशनल फिल्म अवार्ड्स कितना डाइवर्स विमेन रोल में भी होता है. और विच हंटिंग ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी बिग सीरियस सोशल स्टिग्मा एंड एक्नॉलेजिंग इट एंड मेकिंग अ फिल्म ऑन दैट एंड बाय गेटिंग एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो वेरी वेरी बिग थिंग. Talking about women empowerment, Kutch Express में you see the women wearing sarees with shoes. Well, costume also has a very important role play. Costume भी दर्शाता है कि women on the go. Sari, the elegance and shoes that women are ready to take up their way in the life, their way in the world, and women are all set. Absolutely. Any one particular film that you would like to talk to our viewers on Doordarshan who are about to get start this final ceremony? There are a lot of films which are being shot on phones, and there's a movie called Madhyantara which was being shot on celluloid. आप सोचिए आज के ज़माने में celluloid पे उन्होंने पिक्चर पाए. You have to wait for the right moment to happen. It cannot just happen कि आपने आइडिया कंसीव किया और वो हो गया. आपको रुकना पड़ता है right moment के लिए, right lighting के लिए. तो technicalities की भी अगर बात करें तो सब कुछ on point है. Absolutely. And talking about the one film I would like to mention is Attam, which is Attam, a play, and a very very special film. The way suspense has been dealt in this film, the way they have executed it, is about a bunch of people, theatre actors who just finished their show and one of the lead actresses goes missing and all those little things that unfold during the night. A very very exciting film and rightly so winning the best film award at this year's edition. और मिथुन दा को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है, तो आइए देखते हैं उनके इंटरव्यू की कुछ खास झलकियां. From Rigya to Kashmir Files to Shastri, a recent Bengali movie, how do you see your life, your film journey? My journey has not been on a platter. So long journey, but it's a very, very painful journey, ma'am. Very painful journey. Mriga, of course, I did not expect, but there are many big actors that time in the competition. But I was hearing that I am also in the league, and suddenly it announced that I got it. It was a great feeling, and of course I thought that my life is made, but no. National award that time has very less meaning in the film industry, commercially much more, overpowering. So from that to James Bond, it's another big struggle. Then I became the Grandmaster G9. That was my first commercial success. Then came Disco Dancer. That gave me the worldwide fame. Then came my romantic journey with Pyar Jhukta Nahi, and then so on, so on, so on. And now, getting this award with so much of pain, and it looks like now God said, "Okay, now quit." You deserve it. I've given you so much of pain, now this is for it. Those challenges and ups and downs have made you what you are today, right? Well, everybody has to go through ups and downs. So mine was too much. It's beyond. So, well, now it's okay. आपने ये डिस्को डांसर मूवी के बारे में बोला अभी, वो तो एक कल्ट मूवी था जी. उसके बाद तो जैसे वो इंडस्ट्री का एक नक्शा बदल गया जैसा लग रहा था, बिकॉज वो रशिया में आप जाएंगे, वहाँ पे भी आपका इतना क्रेज बढ़ा था, एंड आपके ऊपर तो एक कॉमिक कैरेक्टर भी इंस्पायर हुआ था जिमी करके, वो यूएस में बहुत पॉपुलर हुआ. फिर उसके बाद जो आपको जो फैनफेयर मिला, जो एडुलेशन मिला आपको, तो एक एयरपोर्ट में एक इंसिडेंट भी ऐसा हुआ, आपको याद होगा. देखिए, डिस्को डांसर तो कोई नहीं सोचा था. एक्चुअली डिस्को डांसर
फर्स्ट वीक में इंडस्ट्री ने उसको फ्लॉप करा दी, क्योंकि ये किस किस्म का डांस है भाई, यू नो, ऑल दिस दे थॉट के समथिंग वेग डांसिंग, बट आई एम इंट्रोड्यूसिंग डिस्को. एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा इन लोगों के साथ बात करना, इन अवार्ड विनर्स के साथ, और ओवरऑल एक्सपीरियंस रेड कार्पेट पे जस्ट बिफोर दिस फाइनल सेरेमनी बिगिंस. योर टेक ऑन दैट प्रियदर्शनी? माय टेक इज, इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट से हमने बात करी. नेशनल अवार्ड किसी का पहला था तो किसी का 5वां, पर सबका जो एक्सपीरियंस यूनानिमस ये था कि नेशनल अवार्ड जब भी पहली बार मिले या 5वीं बार मिले, जो फीलिंग होती है, जो एक्साइटमेंट होता है, वो सेम ही है. और अब वो मोमेंट है कि रेड कार्पेट से गुजर के सभी कलाकार और अवार्ड विनर्स अपने अपनी सीट्स पर विराजमान हो चुके हैं, लेकिन अंदर अभी भी वो उत्सुकता है. देयर आर बटरफ्लाइज फ्लाइंग इन देयर स्टमक्स, क्योंकि कुछ ही देर में राष्ट्रपति महोदया उनको सम्मानित करेंगी नेशनल फिल्म अवार्ड से. जी, तो और एक चीज ना भूलें, सब कितने सुंदर लग रहे हैं. एवरीवन इज सो ब्यूटीफुली ड्रेस्ड अप इन देयर साड़ीज, इन देयर कॉस्ट्यूम, वेरी ब्यूटीफुल. आई थिंक इट्स अ बिग डे. So are you. थैंक यू. वेल, सभी का बड़ा दिन है, हमारा भी बड़ा दिन है. वी आर हियर ऑन द रेड कार्पेट, राइट. एंड यू नो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट सेलिब्रेशन. उत्सव का महत्व और भी बढ़ जाता है जब सबकी एनर्जी सिंक्रोनाइज हो, सभी एक वाइब में, खुशी में एक दूसरे की कामयाबी का जश्न मनाएं. अब समय है लेकिन अंदर जाने का, क्योंकि ममता जी और शुभेंदु हमारा वहां इंतजार कर रहे हैं. आप सभी से अभी हम लेते हैं इजाजत. मैं, प्रियदर्शनी, अक्षय और वेरोनिका. धन्यवाद. Good evening, namaskar, ladies and gentlemen, distinguished guests and award winners, everyone who holds cinema close to their heart. We welcome you all to the 70th National Film Awards. This program, on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting, this evening we celebrate the phenomenal achievements and milestones in Indian cinema for the year 2022. These achievements, prestigious awards, recognize the hard work, talent and dedication of all who have contributed to the art of filmmaking. I'm Shubhendu Ghosh with my colleague Mamata Chopra. धन्यवाद शुभेंदु. नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार. देश के प्रतिष्ठित 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के इस पावन अवसर पर आप सभी की गरिमामय उपस्थिति के लिए आप सबका हार्दिक आभार. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से मैं ममता चोपड़ा आप सभी का इस सभागार में हार्दिक स्वागत करती हूं. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का 70वां संस्करण है ये, जिसमें वर्ष 2022 के लिए सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 3 श्रेणियों, सिनेमा पर बेस्ट राइटिंग, नॉन फीचर फिल्म और फीचर फिल्म के लिए अवार्ड्स प्रदान किए जाएंगे. और शुभेंदु, सबको इंतजार रहता है इन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का. Absolutely, and Mamta, this is the 70th edition of the National Awards. What a magnificent journey, ladies and gentlemen, it has been over the decades. Since its inception in the year 1954, the National Film Awards have stood as a beacon of excellence and celebration of artistic and technical merit of our artists, actors, directors, producers, and also writers, technicians, and everyone else, everyone who has a role to play in completing the magic that we witness on the screens. बिल्कुल, और क्यों ना हो, हमारे देश की ताकत ही तो है ये विविधता में एकता. इसी को समर्पित है ये शाम. लेकिन ये न सिर्फ सिनेमाई उत्कृष्टता की परिचायक है, बल्कि भारत की गौरवपूर्ण और बहुभाषी सह अस्तित्व का भी बोध कराती है ये शाम. सिनेमा देश के हर कोने में, गरीब से लेकर अमीर तक, समाज के हर छोर पर खड़े व्यक्ति पर अमिट छाप हमेशा ही छोड़ती आई है. और शुभेंदु, फिल्में मनोरंजन और मनोविनोद के साथ साथ सामाजिक पहलुओं पर भी संदेश देने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाती आई हैं. Cinema has a role to play, Mamta, in all our lives, the way we get inspired to do new things in our respective fields. So without further ado, let's begin this very special evening. A tribute it is to the artistry and magic of Indian cinema.
cinema in the words of iconic filmmaker Mamta Satyajit Ray. He says, cinema is the language of sight and sound. It transcends all man-made boundaries, speaks to the soul, expresses emotions that words alone cannot express. वाह, कितने गहरे शब्द हैं ना ये। और वाकई सिनेमा तो हमारे समाज का सौंदर्य बोध ही है। ये न केवल प्रभावकारी जन परिवर्तन के माध्यम के रूप में, अपितु जनमानस के साथ भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम के रूप में भी सिनेमा ने हमेशा से अपनी अनोखी पैठ बनाई है। ऐसी फिल्में भी हैं जो कई दशकों बाद भी हमारी स्मृतियों में रची बसी हुई हैं। और साल 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ये जो सफर शुरू हुआ, इनका उद्देश्य भी तो यही है ना कि सिने जगत की इन बहुआयामी शख्सियतों को सम्मान प्रदान करना, जिनके कारण ये सिनेमा समाज के हर व्यक्ति के अंतर्मन में अपनी पैठ बना पा रहा है और ये संभव हो पा रहा है। Absolutely, Mamta. And when they called India's diversity its true identity, I think it's beautifully represented through its cinema, cultural diversity, linguistic diversity, and diversity of thoughts and ideas. बिल्कुल शुभेंदु, और यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए इस बार बहुत ही बेहतरीन फीडबैक भी मिला है। अगर मैं फीचर फिल्म कैटेगरी की ही बात करूं तो 32 भाषाओं में, जी हाँ 32 लैंग्वेजेस में 309 एंट्रीज, 309 एंट्रीज प्राप्त हुई हैं। और जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में जो एंट्रीज मिली है वो ये भी दिखाता है कि हमारे देश की सांस्कृतिक और भाषाई संस्कृति कितनी समृद्ध है। And celebration of the diversity continues, ladies and gentlemen. In the non-feature film category, we received 130 entries across 17 languages. Now these films, while shorter in format, are equally powerful in their storytelling. They provide a platform to the diversity of voices and stories that very often otherwise remains on the margins. We also had, Mamta, writing in cinema. We had 26 books, 10 film critics who are competing in the best writing on cinema category. Authors and critics engage, as we know, with cinema beyond the screen, offering reviews, critiques, perspectives to us all, help audiences engage with cinema at a much deeper level. Their work ensures that cinema is not just seen, but also absorbed and understood, studied, appreciated and taken far deeper. These large number of entries, distinguished guests, are symbolized. They reflect not just the enthusiastic participation, but also the sheer scale of creativity across our nation. Every entry, whether a feature film, a non-feature film, or a piece of writing, showcases how cinema is an integral part of India's culture. और शिवेंदु, अगर मैं थोड़े गंभीर लहजे में कहूं तो सिनेमा समाज का वो दस्तावेज है जो वर्तमान के साथ चलता है, जो इतिहास के अनछुए पहलुओं को भी खंगालता है और साथ ही भविष्य को भी अपनी कल्पना शक्ति के दायरे में उकेरता है। ये हम सबकी जिम्मेदारी ही है कि ये समाज के वर्तमान को और अधिक सकारात्मक और रचनात्मक आयाम दे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन कहानियों को प्रतिबिंबित करते हैं जिन्होंने हमें प्रेरित तो किया ही है, लेकिन साथ ही किसी सकारात्मक बदलाव की भी पहल की है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने निर्णायक मंडल के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके मूल्यांकन और विचारशील निर्णयों ने इस वर्ष के पुरस्कार चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Absolutely, we celebrate the National Film Awards, the 70th edition. When we talk about awards, Mamta, the role of the jury becomes hugely important. Let me take this opportunity to invite and welcome our distinguished jury chairpersons on the stage. The jury for Best Writing on Cinema Award was led by noted film historian Shri Gangadhar Mudaliar. The jury for the non-feature films by renowned filmmaker Shri Neela Madhav Panda. The feature film section of the National Film Awards jury was headed by eminent producer and director Shri Rahul Ravel. Before we proceed further, let's take a moment to appreciate the outstanding films that we've enjoyed all through the year, the films that have been recognized by the National Film Awards for the year 2022.
Ladies and gentlemen, please sit back comfortably and turn your attention to the screen for this special presentation. Greater adjuvant stork used to be found all over. Now it's only found in a very few places. And Dadara is a wonderful example of what can happen to save this bird. বিশ্ব দৰবাৰত মানে বিখ্যাত এগৰাকী মহিলা আৰু আমাৰ কাৰণে সেইটো এটা সৌভাগ্য আৰু বাইদেউ যেতিয়া 2005 চনৰ 29 জুনৰ দিনা তেওঁ বিশ্ব শান্তি নোবেল বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে আৰু সেইদিনাখনি উইথেন্টিং ইস্যুটো মানে ৰাইজে গম পাইছে মিছন বিৰুবলৈ আমি এটা সজাগ সচেতন হিচাপে কেওধনী বেজ বিজালি সব মানে এইবিলাক কৰিব লাগে মই কৈছো गोष्ट ऐक तुझ्या आजूबाजूचा आवाज ऐक श्वास घेणारे पहाट कुजबुजणारी झाड काय सांगते ती ये क्या है दूरदर्शक दूरदर्शक दूर का दर्शक आपका भविष्य कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है ಬೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಜಮಾಯಿಸಿ ಹೊಂಡೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಬೇಕು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಅನ್ನೋರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಣ್ಲೆ You pick the time. Tick 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 tick. Tick 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 tick. The average age of a girl getting trafficked has dropped from 16 to 12. मैं पहले घर जाएगा हाँ आपका फैमिली तो आएंगे ना आपके घर जाएंगे ওর তো এমনি ভাবে ছাড় দিলে হবে না ও তো পুরোটা এটার মধ্যে তো বাইরে চলে যাচ্ছে দাদা ওর সাজাটা হলো The Chambal River, the last stronghold of a vanishing crocodilian, perilously close to extinction. What they discover may be the key to this extraordinary reptile's survival. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಾಲಯ ನೃತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಹುಟ್ಟು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ब्रिटिशांच्या हातात बंदुका असल्या तरी इथल्या मावळ्यांच्या शौर्याची भीती त्यांना होती ही युद्धकला जिवंत राहावी म्हणून काठीने सराव सुरू ठेवला गिरणी कामगारांचा लढा आता अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचला होता 18 जानेवारी 1982 ला संपूर्ण मुंबईच्या गिरणगावामध्ये संप झाला
जर शिवसेनेने तो संपादक केला असता तर पुढे दत्ता सामंत आलेच नसते. 2.5 लाख कामगार होते, ते 1 लाख कामगारांना नोकऱ्यावर घेतलंच नाही. म्हणजे मोठं नुकसान झालं त्या संपामुळे, म्हणजे त्यांची वाटच लागली. अगर उस टाइम वॉश हो जाता तो मतलब मेरी आई का विजन बच जाता. कैसे कैसे लोग हैं यार, उसने मेरा 1 मिनट में पूरा लाइफ बदल दिया. परी हूँ मैं, उड़ती रहती हूँ. ഈ വിളക്ക് ഞാൻ കെടുത്തിയാൽ ഒതല്ലോ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അവൾ ഇടയുന്നു. दो मंजिलों का घर तो बन गया, कमरे भी बढ़ गए, पर इस एक घर में न जाने कब हम सोने अपने अपने कमरों में खुद के घर बना लिए. क्या हुआ? कैब के लिए वेट कर रहा हूँ. आजा, छोड़ देता हूँ. मीटिंग में ऐसे ही जाते हो? तो मैं पहनता हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम आपको. बाप बेटे के झगड़े में ना मैं भाग गई. मैं चाहती हूँ इस बार की होली हम सब साथ मनाकर इस घर से निकले. पांडिचेरी अचानक से? कभी कभी तो लगता है एक ही घर में रहते हैं, फिर भी कोई किसी को नहीं जानता. शूटिंग के दाई खुद के राव फनाना हम फायदा है बिगल दाई. ఈ కార్యానికి వైద్యుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఎంచుకున్న మరో వైద్యుడు నువ్వే. ఇది మైథాలజీ కాదు, హిస్టరీ. దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ అవర్ గాడ్స్ but also our ancestors. அருண்மொழி மணிமுடிக்கு ஆசைப்படுகிறானா? யார் சொன்ன? கரிகாலா, சோழ நாட்டு பட்டத்துக்குரியவன் நீ. சோழ நாட்டை காக்க வேண்டிய பொறுப்பு உன்னோடு. ஆதித்த கரிகாலன் எந்த நேரமும் படையுடன் வரலாம். குந்தவை ஒரு ஒற்றனை அனுப்பியிருக்கிறாள் அருண்மொழியை வரவழைக்க. சோழ நாட்டை காக்க வேண்டியவர்களை அதை அழிக்க சதி செய்கிறார். அவளை மறக்கத்தான், என்னை மறக்கத்தான். मेरा होना ना होना जरूरी नहीं, जरूरी है आजादी दे जज्बे दा तुखदे रहना. इतिहास सदा कुर्बानियां नाल लिखे जाते हैं, कदे अपनियां कुर्बानियां नाल ते कदे अपने दियां कुर्बानियां नाल. ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢିଥିଲି ସାର୍, ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ରୋଗକୁ ଠିକ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଡକ୍ଟର ରୋଗୀକୁ ଠିକ କରେ. सिद्धार्थ महाटी. एडी की स्कूल मु जानबाई पीएचडी डॉक्टर अच्छे. डॉक्टर दिस नाव तू डॉक्टर पर. आमचं शेवटचं बोलणं, चिठ्ठ्या लिहिणं. पिस्तूल. हो य इट्स ओके, इट्स ओके. थांबा. कोण ब्लॅकमेल करेल? Criminal, he is the biggest businessman. This is the biggest national issue. मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी. ರಕ್ತದಿಂದ ಬರೆದಿರೋ ಕತೆ ಇದು.
ಶಾಯಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ একজন মানুষ নিরুদ্দেশ, তাকে নিয়ে আমরা এইসব আলোচনা নাই বা করলাম। আলোচনা থেকে আলো আর চোনাটাকে আলাদা করাটাই আমার প্রফেশন ম্যাডাম। খুব জ্বালিয়েছিল কাবেরী মিসিং হওয়ার পর। সরকার কি আর কোনো সুস্থ লোক খুঁজে পায় না? আমি আবার আসবো। গাহৰি মাংসটো সানি ফালে খৰিকাত পুৰি খোৱা মজাটো কোনো মাছত নাই। মাছ খালেতো পেটটো নোলায়। சோகமா இளையராஜா பாட்டு கேட்டு உட்கார்ந்துட்டுப்பான். யோ பழம், மேல என்ன ஒரே சத்தம்? உள்ள பேர் அடிச்சு விட்டேன். சோபனா என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, சின்ன வயசுல இருந்து என் ஃப்ரெண்டு. ஐ லவ் யூ சொன்னாலா? கிஸ் அடிச்சீங்களா? சார் சொன்னா என்ன, இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு கிஸ் கொடுத்தா நம்ப முடியலடா. நம்ம தான் நம்மள ரொம்ப கம்மியா நினைக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா நம்ம ஒரு ஆள் தான் நினைக்கிறேன். प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई हैं। लंगड़े, दूसरी टांग भी तुड़वा होगा कि? सर जी, मेरी 10 पुश्तों ने भारत माँ की सेवा की है। मैं ये कब भागा हूं सर जी, जब फौज में भर्ती नहीं हो पाया। और मेरा बेटा तो नालायक है, फौज ज्वाइन नहीं करना चाहता। सोचिया था मेरा सपना पूरा करेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा। अरे नहीं बनना मंडी फौजी। President of India, Srimati Draupadi Murmu. As we formally begin this program, may I request everyone to please rise for the national anthem. जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे
सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार। देश की सिनेमाई उत्कृष्टता का जश्न राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के 70वें संस्करण में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से हम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण का भी हृदय से स्वागत करते हैं और साथ ही संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए पुरस्कृत कलाकार, निर्णायक मंडल एवं अन्य अतिथिगण का भी हार्दिक अभिनंदन। ये पुरस्कार समारोह भारतीय फिल्मों की श्रेष्ठता और रचनात्मकता से परिचित होने के साथ साथ सिनेमा जगत की महत्वपूर्ण शख्सियतों से रूबरू होने का भी अनुपम अवसर है। Ladies and gentlemen, as we take this award ceremony forward, may I request you to put your hands together to welcome the dignitaries and distinguished jury on the stage. Honorable President Srimati Draupadi Murmu, Union Minister for Information and Broadcasting, Railways, Electronics, Information Technology, Shri Ashwini Vaishnav, Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Sanjay Jaju, and chairpersons of the jury, Shri Rahul Ravel, Shri Neela Madhav Panda, and Shri Gangadhar Mudliar. और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले मैं माननीय सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्री संजय जाजू को स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। Honorable President of India, Sammaniya Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Minister of Information and Broadcasting, Railways, IT and Communications, Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan ji, respected jury chairpersons and members, esteemed members of the film industry, distinguished guests, and friends from the media. A very warm and heartfelt welcome to this prestigious evening, the 70th National Film Awards. Today's ceremony is a celebration of the boundless creativity, dedication, and passion that has made Indian cinema a global powerhouse of storytelling. At the outset, I'd like to extend a special welcome to our Honorable President. Ma'am, we are deeply honored by your presence. It adds great significance to this evening. I also extend my heartfelt congratulations to all the award winners. Your remarkable talent and hard work have enriched the fabric of Indian cinema, and you all stand as torchbearers of this vibrant and evolving industry. आज के इस विशेष अवसर पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता श्री मिथुन चक्रवर्ती जी का भी हम विशेष स्वागत करते हुए हम उनके सिनेमा में अविस्मरणीय योगदान को सम्मानित करते हैं। उनका प्रेरणादायक सफर हमें सिखाता है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज की आत्मा का प्रतिबिंब भी है। आपकी उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को और भी विशेष बना रही है। Friends, the National Film Awards is a unique celebration, an opportunity to acknowledge the incredible diversity, creativity, and innovation that define Indian cinema. This year, we received 309 films in 32 different languages in the feature film category and 128 films in 17 languages in the non-feature category. This vast diversity speaks volumes about the richness of our cultural landscape and the inclusivity of our storytelling. Our jury had the challenging task
of selecting the finest works from this exceptional pool of talent. To them, I extend my deepest gratitude for their dedication and commitment to upholding the highest standards of cinematic excellence. As we honor the cinematic achievements of 2022, we also recognize the resilience of our film industry. In the face of adversity, particularly during the global pandemic, Indian cinema not only persevered but thrived. Through stories of hope, determination, and resilience, filmmakers continue to captivate audiences, showcasing the indomitable spirit of Indian cinema. इस समय हमारी फिल्म इंडस्ट्री का योगदान सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। भारतीय सिनेमा ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय फिल्मों को वैश्विक स्तर पर जिस सराहना और प्रशंसा के साथ देखा जा रहा है, वह हमारे देश की सांस्कृतिक शक्ति और कहानी कहने की अद्वितीय शैली को दर्शाता है। The Ministry of Information and Broadcasting remains deeply committed to supporting Indian cinema through various initiatives. One of our key steps has been the amendment to the Cinematograph Act, which will modernize the film certification process and also help in combating piracy. Looking ahead, we are excited to organize the upcoming International Film Festival of India in Goa in November this year, and the marquee event, World Audiovisual and Entertainment Summit, WAVES, which will take place in February 2025. This summit will be a global platform for leaders, creators, and innovators in the media and entertainment industries to explore new opportunities for collaboration and growth, which will solidify India's place in the global entertainment ecosystem. आने वाले वर्षों में हम भारतीय सिनेमा के उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे हैं। हमारे पास अनगिनत कहानियां हैं जो अभी भी कहे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं, और यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन कहानियों को उपयुक्त मंच दें। मैं इस अवसर पर आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप नए विचारों को अपनाएं, रचनात्मक सहयोग को बढ़ावा दें और भारतीय सिनेमा को विश्व सिनेमा के मानचित्र पर और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। Lastly, I am pleased to inform you that despite the delays caused by the pandemic, the process for the 71st National Film Awards for 2023 is well underway, with over 500 entries received this time. We remain committed to ensuring that the process continues smoothly, recognizing the exceptional talent that defines our industry. As we celebrate the achievements of this year, let us all look forward to the limitless possibilities that lie ahead. Indian cinema is at the pivotal moment with a bright future full of innovation and creativity. Once again, on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting, I warmly welcome you all to this special evening. Let us honor the past, embrace the present, and look forward to the stories that are yet to be told. Thank you, and enjoy the evening ahead. Thank you. Thank you, Secretary Sir, for telling us about the highlights of the awards and also the context in which Indian cinema assumes importance. सम्मानीय अतिथिगण, आइए अब उस बहुप्रतीक्षित पल में कदम रखें जिसके साथ ही 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के वितरण का आरंभ हो रहा है। अत्यंत कृतज्ञ भाव से मैं आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आग्रह करती हूं कि वे पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। And may I also request Union Minister Shri Ashwini Vaishnav, Minister of State Dr. L. Murugan, Secretary Shri Sanjay Jaju to kindly join Honorable President for distribution of the awards. पुरस्कार वितरण के आरंभ में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। These awards aim to promote understanding, appreciation and critique of cinema as art form. In order to develop it further, they seek to encourage the dissemination of knowledge, information on cinema and related activities among the masses through book reviews. इस श्रेणी में सर्वप्रथम है सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार और फिल्म समीक्षा की बेहतरीन योग्यता के लिए पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री दीपक दुआ।
Deepak Dua's writing provides a deep insight into sensibilities of the films that he reviews. Well-researched, his columns and articles ably capture the nuances of cinema that he appraises. स्वर्ण कमल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है फिल्म समीक्षक दीपक दुआ को। The next award in this category, Best Book on Cinema, recipient is Shri Aniruddha Bhattacharya for the book Kishore Kumar, The Ultimate Biography, being awarded the Golden Lotus for the book. नई पीढ़ी के पाठकों के लिए जाने माने गायक किशोर कुमार जी की प्रतिभा तथा फिल्म संगीत का जश्न मनाती है पुस्तक किशोर कुमार दी अल्टीमेट बायोग्राफी। बचपन से ही हम किशोरदा के गीतों को सुन सुनकर बड़े हुए हैं। उन्हीं की जीवनी पर आधारित ये पुस्तक जिसके लिए पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। और साथ ही बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर, क्योंकि जीवन के हर पहलू को बेहद सरलता से छुआ है और ये उनके जीवन की कठिन यात्रा को आसानी से समझने में भी मदद करता है। फिल्म के प्रकाशक हैं हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हार्पर कॉलिंस की ओर से पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री उडियन मित्रा। आपको भी प्राप्त हो रहा है स्वर्ण कमल का सम्मान। HarperCollins has published some of the finest writers from the Indian subcontinent and around the world, publishing some 250 new books every year. बेस्ट राइटिंग के बाद अब कार्यक्रम का अगला पड़ाव गैर फीचर फिल्म श्रेणी के पुरस्कार। इस कैटेगरी में 4 विशेष उल्लेख समेत कुल 25 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। We begin with the special mention being presented to the producer of the Assamese film Hargila, the greater Edgerton Stock. On behalf of Pi Entertainment, Ms. Meena Mahanta will be honored with a certificate of recognition. And Dada is a wonderful example of what can happen to save this bird. The film brings to light efforts to save the greater Edgerton stork from extinction. लुप्तप्राय ग्रेटर एडजर्टन स्टॉक को बचाने के भारत के जमीनी स्तर के प्रयासों को डॉक्यूमेंट करती है ये असमी भाषा की फिल्म हरगिला, द ग्रेटर एडजर्टन स्टॉक। विशेष उल्लेख के अंतर्गत इसी असमी फिल्म हरगिला, द ग्रेटर एडजर्टन स्टॉक के निर्देशक श्री पार्था सारथी महंत भी प्राप्त कर रहे हैं प्रमाण पत्र। Dr. Partha Sarathy is a police officer and social worker with over 30 years of service, excels in various fields including arts, literature and cinema. The third award of this category is conferred on the Assamese film Birubala, Witch to Padma Shri, to Amy Barua Production Society, Ms. Mala Barua being awarded with a certificate. আৰু বাইদেউ যেতিয়া 2005 চনৰ 29 জুনৰ দিনা তেওঁ বিশ্ব শান্তি নোবেল বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰিছে। বিৰোধলৈ আমি এটা সজাগ সচেতন হিচাপে মানে এইবিলাক কৰিব লাগে। सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने वाले बीरूबाला राभा के जीवन पर रोशनी डालती है ये फिल्म बीरूबाला, विच टू पद्मश्री।
इसी असमी फिल्म की निर्देशिका मिस एमी बरुआ को भी इनकी कृति के लिए विशेष उल्लेख के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। The film highlights Birubala Raba's courage and determination to single-handedly fight the scourge of witch hunting in rural Assam. पद्मश्री का सम्मान प्राप्त बीरूबाला का जीवन आज सबके लिए है एक मिसाल जिस पर आधारित है ये फिल्म जिसे पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी का अगला अवार्ड बेस्ट स्क्रिप्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश की फिल्म मोनो नो आवारे को प्रदान किया जा रहा है। बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर श्री कौशिक सरकार प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। The film is recognized for the sensitive portrayal of events leading to acceptance of loss and impermanence of life as seen to the eyes of a child. Moving on, ladies and gentlemen, for the best narration voiceover, Shri Sumant Shinde is being awarded with Silver Lotus for the Marathi film Murmurs of the Jungle. गोष्ट ऐक, तुझ्या आजूबाजूचा आवाज ऐक, काय सांगते ती? The voiceover connects the emotions of very delicately, effectively to the mysterious intonations and oral textures. जंगल भी बोलता है और कैसे उसे अपनी फिल्म में प्रदर्शित किया है इसी को प्रदर्शित करती ये फिल्म और अब गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार। और ये बेहद खास है क्योंकि फिल्म फुर्सत के लिए अपने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के रूप में संगीत निर्देशक श्री विशाल भारद्वाज के नाम रजत कमल का सम्मान। The film Fursat presents a dramatic musical soundscape infusing fantasy into a futuristic narrative. The next award is for Best Editing, being presented to Shri Suresh Aras for Kannada film Madhyantar, being awarded with Silver Lotus. You pick the time. The editor excels in creating an engaging narrative through the use of effective shot selection, rhythmic flow, and admirable pace. कहते हैं फिल्म एडिट टेबल पर बनती या बिगड़ती है और ये फिल्म कितनी खूबसूरत बनी इसीलिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। Moving on, the next award is Best Sound Design, being conferred to Shri Manas Chaudhary for the film Yan in Hindi and Malavi, being recognized with Silver Lotus. श्री मानस चौधरी ने कहानी में पीड़ा व्यक्त करने के लिए शानदार सोनिक्स के साथ न्यूनतम ध्वनि का उपयोग करते हुए जो साउंड डिजाइन किया उसी के लिए वे हासिल कर रहे हैं इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। जोरदार तालियां हो जाएं। और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए फिल्म मोनो नो आवारे के सिनेमेटोग्राफर श्री सिद्धार्थ दीवान को रजत कमल से नवाजा जा रहा है। फिल्म ने एक बच्चे की आंखों देखी घटनाओं के संवेदनशील चित्रण के लिए ही श्री सिद्धार्थ दीवान ने हासिल किया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। और मान्यवर गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए
स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस का सम्मान प्राप्त कर रही है फिल्म फ्रॉम द शैडोज की निर्देशिका मिस मिरियम चांडी मेनाचेरी। The average age of a girl getting trafficked has dropped from 16 to 12. ना आप तो घर जाएंगे और तो एमनी भावे छाड़ दिले হবে। एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर आधारित फिल्म लापता लड़कियों की खोज के लिए किए गए कई अथक प्रयासों और मानसिक संघर्षों को संवेदनशील रूप से चित्रित करने के लिए ही मिस मिरियम चांडी मेनाचेरी के लिए जोरदार तालियां। And taking the awards further, the next award, Best Short Film, being presented to HM Production for the film Sunyota in Assamese. On behalf of HM Production, Shri Hiranmoy Gogoi will receive the Silver Lotus. सुन्योटा यानी शून्य, बिना बातचीत के, बिना इंटेंस इमोशंस को प्रदर्शित किए ही दुख की अनकही बारीकियों को छूती है ये फिल्म सुन्योटा। For the same film, Sunyota in Assamese, director Navapan Deka being awarded with the Silver Lotus. The film is a poignant and moving portrait of love and loss, subtly uses shades of grey silences to explore the turmoil in a life resigned to fate. किसी अपने को खोने का गम, अपने से दूर जाने का गम प्रदर्शित करती ये फिल्म। और मान्यवर इस श्रेणी में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म है जेबी प्रोडक्शंस की साइलेंट फिल्म अ कोकोनट ट्री। जेबी प्रोडक्शंस की तरफ से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री रॉबिन्सन थॉमस। आप पा रहे हैं रजत कमल। इस फिल्म में शब्द नहीं बोलते बल्कि रंग बोलते हैं, स्केचेस बोलते हैं जिनमें रंग भरती है ध्वनि, म्यूजिक, और ये बता रही है एक पेड़ की कहानी और कैसे मनुष्यों के लिए प्रासंगिक है ये। इस फिल्म के निर्देशक और एनिमेटर श्री जोशी बेनेडिक्ट को भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल। The film is recognized for bold use of colors, sketches and timing along with stylized animation techniques. कई बार बहुत गहन विषय को बहुत साधारण तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है जो हमारे हृदय को भी स्पर्श करे। इसी का उदाहरण देती है ये फिल्म द कोकोनट ट्री। Distinguished guests, let's take the journey forward. The next award is for the best non-feature film promoting social and environmental values. Goes to the English film On the Brink Season 2, Gharyal. On behalf of Gaya People and the Habitats Trust, Ms. Roshni Nadar Malhotra will receive a Silver Lotus. What they discover may be the key to this extraordinary reptile's survival. अगर पर्यावरण को लेकर आप भी गंभीर हैं तो ये फिल्म आपके लिए भी है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती ये फिल्म न केवल घड़ियाल पर ही केंद्रित है बल्कि भारत भर में विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों की दुर्दशा पर भी रोशनी डालती है। एक अत्यंत गंभीर विषय जिसे लेकर हम सबको सतर्क होने की जरूरत है। And for the same film, director Ms. Akanksha Sood Singh is been awarded with Silver Lotus. The film recognized for chronicling the journey of lesser-known crocodilian species, as we know, Gharyal, through the everyday effort of the unsung heroes. Shall we put our hands together for the filmmaker? और अब बात बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार की,
और इसके लिए मराठी फिल्म मर्मर्स ऑफ द जंगल को चयनित किया गया है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री सोहेल अभिजीत वैद्य को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। गोष्ट ऐक, तुझ्या आजूबाजूचा आवाज ऐक, काय सांगते ती? You could hear the manner in which the sounds of jungle were recreated as whispering trees pass down stories of gods and ancestors. A visual poetry unfolds, offering a masterfully crafted piece of new age storytelling. कला और संस्कृति पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कन्नड़ा फिल्म रंग वैभोगा। निर्माता श्री सागर पुराणिक को रजत कमल। ಅದು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? Celebrating the beauty of India's culture, the film is a well-researched study of the temple dance traditions of Karnataka. और इसी कन्नड़ा फिल्म रंग वैभोगा के निर्देशक श्री सुनील पुराणिक को भी रजत कमल से नवाजा जा रहा है। The filmmakers being awarded for showcasing creativity and cultural heritage of Karnataka to exceptional depths. Shall we put our hands together for the filmmakers on the stage? और मान्यवर, कला और संस्कृति पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मराठी फिल्म वारसा का भी चयन किया गया है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री सचिन बालासाहेब सूर्यवंशी को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। ही युद्धकला जिवंत राहावी म्हणून काठीने सराव सुरू ठेवला। The fascinating film Varsa highlights the traditional martial arts and the manner in which these skills are transferred through generations. तो महाराष्ट्र की संस्कृति को प्रदर्शित करती ये फिल्म वारसा। For the best biographical historical reconstruction compilation film, Marathi film Anki Ek Mohenjo-daro being awarded on behalf of producer the Goa Studio and Ashok Rane Production, Shri Rajesh R. Bednekar to receive the Silver Lotus. सुरू होते पहिली पाळी मोठ्या डौलात साक्षीरे गरगरा मला कामगार पुस्तक फ्री बेकार करा म्हणजे गिरणी कामगार गेल्याबरोबर फिल्म आणखी एक मोहनजोदाड़ो जो मुंबई के गिरणगांव की कहानी प्रस्तुत करती है। गिरणगांव वो क्षेत्र जहां मिल मजदूर रहते हैं और इस फिल्म में आपने मिल मजदूरों की ही आवाज को प्रस्तुत किया है। एक डॉक्यूमेंट्री है आणखी एक मोहनजोदाड़ो। And for the same film, director Shri Ashok Rane being awarded with the Silver Lotus. फिल्म के निर्देशक श्री अशोक राणे ने गिरणगांव मिल मजदूरों की मुंबई के लोकाचार को जीवित रखने में उनके योगदान को प्रस्तुत करते हुए हासिल किया है अपना चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। एक बार जोरदार तालियां। और अब निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार कन्नड़ा फिल्म मध्यांतर के लिए निर्देशक श्री बस्ती दिनेश शेनॉय को स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस से नवाजा जा रहा है। The film, ladies and gentlemen, is recognized for the exceptional command over dialogue and visual storytelling in the short film format. निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री बस्ती दिनेश शेनॉय। On to our next award. Award for the best non-feature film goes to Hindi and Urdu film Aina. Producer and director Shri Siddhant Sareen receiving the Golden Lotus. अगर
उस टाइम वॉश हो जाता तो मतलब मेरी आई का विजन बच जाता। कैसे कैसे लोग हैं यार। करुणा और संवेदनशीलता के साथ सुनाई गई जीवन संघर्ष की कहानी है फिल्म आईना। धैर्य और दृढ़ता की एक सहानुभूतिपूर्ण कहानी जो देखने वाले के हृदय को स्पर्श करती है। Thank you, Honorable President and distinguished guests. The award ceremony has just begun. For now, I would request Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, to address the gathering. Honorable President of India, Madam Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Minister of Information and Broadcasting, Sri Ashwini Vaishnav ji, Sri Sanjay Jaju ji, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Dada Sahib Phalke Award winner Sri Mithun Chakravarti ji, juries, chairpersons, members, all award winners, media persons, namaste, vanakkam to you all. Today it is an immense privilege to stand here on the occasion of the 70th National Film Awards, which undoubtedly is one of the most prestigious film award in India. This National Film Awards, first of all, I congratulate to the juries how they dedicated and how they are worked, tireless work, and they identified the real talents here, so that the talent people are awarded here. And the National Film Awards have always been beacon of excellence, recognizing outstanding contributions across various facets of filmmaking and honoring the diversity that defines Indian cinema. I want to mention a few words about our Mithun Chakravarti ji. I would like to extend my heartfelt congratulations to Mithun Chakravarti ji as an alumnus of FITT Pune. It is in our INB Institute. And last year I visited Tashkent. In the Tashkent streets, the people are dancing Jimmy Jimmy. So, how he is famous in the out of country. So I congratulate once again Mithun Chakravarti ji. Our Indian cinema is how now is emerging in a global. Our Indian cinema is playing a major role in the world cinema now. Particularly the South Indian cinemas, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada. So these movies now tremendously, they are doing very hard work, and the movies are not only the regional movies, the movies are pan-India movies, the movies are the world-level movies. Last year, few of movies went for the Oscar awards from South Indian movies. So I don't want to mention the South Indian because of the regional movies, how they are playing a major role. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision and our Minister Shri Ashwin Vaishnav ji's guidance, our department we want to be product to the producers. So for that, our ministry brought an amendment in Cinematography Act after 40 years to protect from the piracy. So this
is a help to the business and ease of doing business and the cinema industry. Today is the AVGC sector is transforming from the industry as a multi-billion-dollar global industry. We have seen how the VFS are using these nowadays new cinemas. For that, our government of India, our ministry is going to establish a national center for excellence for AVGC in Mumbai. It is a world-class, our institute is going to come. And also, in this all broadcasting medias, whether it is in traditional media, whether it is in cinema, whether it is in AVGC, whether it is in satellite, so we want to bring up one umbrella. So for that, a WAVES conference, world level summit is going to happen in this year. So for the promotion of the industry, for the promotion of the sector, media and entertainment sector, so this summit is going to help as a creator economy in our country. And is the Film Facilitator Office is promoting co-production in India, and our government, our Prime Minister's guidance and our Sri Ashwin Vaishnaviji's, the Indian cinema in this media and entertainment sector is leading the sector. Once again, I congratulate to each and every award winners to their remarkable achievements. Your contribution continue to push the boundaries of Indian cinema, making it an industry that we can all take pride in. Today's celebration will serve as a reminder of the power of cinema to inspire, challenge and entertain. Let us all celebrate the nature of the art of filmmaking, ensure that Indian cinema reaches new heights while staying true of its roots. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Dr. Murugan. Ladies and gentlemen, we now move on to the next category of film awards. May I now invite and request Honorable President Srimati Draupadi Murmu and the dignitaries to come forward for the remaining awards, please. मान्यवर, कार्यक्रम के इस पड़ाव में फीचर फिल्म श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आरंभ विशेष उल्लेख यानी स्पेशल मेंशन के साथ मलयालम भाषा की फिल्म कदिकन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं श्री संजॉय सलील चौधरी। വിളക്ക് ഞാൻ കെടുത്തിയാൽ മുതല്ലോ ഇടയുന്നു. और ज्यूरी की ओर से ये स्पेशल मेंशन है इस फिल्म के लिए प्रयोग की गई धुनों के लिए। फिल्म में गैर परंपरागत नवीन धुन रचने के साथ ये उम्मीद जगाते हैं कि धुनें अभी जिंदा हैं। और हिंदी फिल्म गुलमोहर के लिए अपनी अभिनय कला के लिए विशेष उल्लेख का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं जाने माने अभिनेता श्री मनोज बाजपेयी। तो जाने कब हम सबने अपने अपने कमरों में खुद के घर बना लिए। Manoj Bajpayee displays skilled precision to showcase all the hidden aspects of human emotions, making the character come alive, a part to remember. Best feature film in language other than English, Schedule of the Constitution. For the best Tiva film, producer and director Dr. Bobby Sarma Barwa being awarded with Silver Lotus for the film Sikesal. In the film, the dream to educate the people in a remote village of Ulukunchi becomes the purpose of life of a retired primary school teacher. Shall we put our hands together for the filmmaker? और स्पेशल मेंशन से आगे बढ़ते हुए फीचर फिल्म श्रेणी में अब सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की बात। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म है कार्तिकेय 2। फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स LLP एंड पीपल मीडिया फैक्ट्री LLP की तरफ से श्री अभिषेक अग्रवाल प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। ఈ
కార్యానికి వైద్యుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఎంచుకున్న ఇది మైథాలజీ కాదు, హిస్టరీ. The film is a masterful blend of religion and science, delivering a captivating mythical thriller that stands out in Telugu cinema. तो सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 और इसी फिल्म के निर्देशक श्री चंदू मोंदेती भी प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान. धर्म और विज्ञान का कुशल समागम प्रस्तुत करती है ये फिल्म को एक ऐसी बांध कर रखने वाली थ्रिलर का रूप देता है इनका ये कला जो तेलुगु सिनेमा में अनोखा है और इसी के लिए ये प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान. फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 को जाता है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार. फिल्म के निर्माता मद्रास टॉकीज एंड लाइका प्रोडक्शंस की तरफ से जाने माने एंटरप्रेन्योर और फिल्म प्रोड्यूसर श्री सुभास्करन अलीराजा को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है. ஆதித்த கரிகாலன் எந்த நேரமும் படையுடன் வரலாம். குந்தவை ஒருவர். The film delves into the life and times of the Chola dynasty with tremendous visual appeal and emotional drama. And for Ponniyin Selvan Part 1, producer and director Shri Mani Ratnam being awarded with Silver Lotus. चोल राजवंश की जीत पर भावनात्मकता और दृश्य की भव्यता को बेहद ही सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित श्री मणिरत्नम ग्रहण कर रहे हैं अपना 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार. जोरदार तालियां. और अब सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दीती प्रोड्यूसर जी नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री रविंद्र नारायण रजत कमल प्राप्त कर रहे हैं. मेरा होना ना होना जरूरी नहीं, जरूरी है आजादी के जज्बे का तुखते रहना. A slice of history and literature depicting the freedom struggle of our motherland. पंजाबी फिल्म बागी दीती जो देशभक्ति से ही जुड़ी एक कहानी प्रस्तुत करती है और फिल्म के निर्देशक Director of the film Shri Mukesh Gautam also being awarded with Silver Lotus. सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दीती जो आजादी के संग्राम में गदर आंदोलन में एक 14 वर्षीय लड़की की हिम्मत की सम्मोहक कहानी प्रस्तुत करती है. सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म के तौर पर फिल्म दमन को पुरस्कृत किया जा रहा है. जेपी मोशन पिक्चर्स के श्री दीपेंद्र समल प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल. आपण मैंने ये खाली ड्यूटी करने आसे ये लोक मान जीवन बचाऊँ आ लोक मान सुरक्षित शुएगा हेले The film Daman deals with the malaria eradication program in the inaccessible tribal areas of Orissa. और फिल्म के निर्देशक श्री विशाल मौर्य को भी रजत कमल से नवाजा जा रहा है. फिल्म का टाइटल है दमन दमन यानी दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण जो ओडिशा के दुर्गम नक्सल बाहुल्य आदिवासी अंचल मलकानगिरी में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से ही संबंधित है. और फिल्म के निर्देशक श्री देवी प्रसाद लेंका को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है. Through the character of Dr. Siddharth, the film captures the challenge of development intervention in the remote Malkangiri, Odisha. किसी भी प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में जब इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन पर फिल्मकार की नजर पड़ती है तो जाहिर है फिल्म पाती है इस तरह के पुरस्कार. और मलयालम भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर उर्वशी थिएटर्स की फिल्म साउदी वेलाका CC.225/2009 का चयन किया गया है. फिल्म के प्रोड्यूसर हैं श्री संदीप सेनन जिन्हें रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है.
Ladies and gentlemen, the thought-provoking film dramatizes the pendency of cases in Indian courts, makes an earnest call for reforms of the responsive justice system. Shall we put our hands together for the filmmaker on the stage? फिल्म के निर्देशक श्री तरुण मूर्ति भी ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। भारतीय अदालतों में लंबित मामलों पर एक गहन और बांध कर रखने वाली फिल्म है ये, जो संवेदनशील न्याय प्रणाली का भी आह्वान करती है। एक बार जोरदार तालियां। Moving on to the award for the best Kannada film goes to KGF Chapter 2, Srimati Shailaja Vijay receiving Silver Lotus on behalf of producer Hombale Films LLP. Criminal, he is the biggest businessman. This is the biggest national issue. KGF 2 involves a battle, as we know, among numerous gangs for possession of a vast collection of wealth. एक पीरियड एक्शन फिल्म है ये, जिसे इसकी असाधारण कल्पना और अविश्वसनीय तकनीकी बारीकियों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त कर रही है फिल्म गुलमोहर। फिल्म के निर्माता स्टार स्टूडियोज, ऑटोनॉमस वर्क्स एंड चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट की तरफ से श्री विक्रम दुग्गल रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं। क्या हुआ? कैब के लिए वेट कर रहा हूँ। आ जाओ, छोड़ देता हूँ। मीटिंग में ऐसे ही जाते हो तो मैं पहनता हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम आपको। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर हमारे वर्तमान समाज की संवेदनाओं के साथ साथ रिश्तों को भी गहराई से प्रदर्शित करती है। फिल्म गुलमोहर के लिए जोरदार तालियां। The next award, Best Hindi Film and Best Screenplay, being given to director and dialogue writer Shri Rahul V. Chittala for Hindi film Gulmohar again, receiving the Silver Lotus. तो फिल्म गुलमोहर जिसको जा रहा है ये दूसरा पुरस्कार, और ये फिल्म अपने संवादों से विशेष छाप भी छोड़ती है। इसमें लेखक हर किरदार को अभिव्यक्त होने के उचित अवसर देता है। फिल्म के डायलॉग्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हम सभी जानते हैं, और गुलमोहर भी इसका एक उदाहरण। The award for the best Bengali film given to Kaveri Antardhan, Shri Surinder Singh receiving Silver Lotus on behalf of Surinder Films Private Limited. নিরুদ্দেশ তাকে নিয়ে আমরা এইসব আলোচনা নাই বা করলাম। আলোচনা থেকে সরকার কি কোনো সুস্থ লোক খুঁজে পায় না? उथल पुथल भरे समय को संवेदनशील तरीके से दिखाने और अभिनेताओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ही श्री सुरेंद्र सिंह प्राप्त कर रहे हैं ये सम्मान। And director of film Kaveri Antardhan, Shri Kaushik Ganguly, being awarded with the Silver Lotus. Set against the backdrop of the Naxalbari uprising, the film been recognized for sensitive handling of tumultuous time. Kaushik Ganguly, known for his realistic cinema, is a multiple National Film Awards winner. Let's put our hands together for him, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म के तौर पर फिल्म एमुथी पुथी का चयन किया गया है, और निर्माता मेटानॉर्मल मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और रूहान फिल्म्स की तरफ से रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं श्री सुनील कुमार अग्रवाल। हानि फाले पूरी का पूरी फुआ मोदा तो पूनू मासोत नाय। मानवीय महत्वाकांक्षाओं और उनकी पूर्ति की जटिल प्रवृत्ति पर इसकी शानदार कथा के लिए फिल्म एमुथी पुथी है सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म। और फिल्म के निर्देशक मिस कुलानंदिनी महंत को भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। As we put our hands together for the filmmaker, this is a film that recognizes and is being awarded for its brilliant narrative, complex nature of human ambition and fulfillment.
And the award for the Best Action Direction Award being given to stunt choreographer Shri Anbumani MM and Shri Arivumani MM, receiving Silver Lotus for Kannada film KGF Chapter 2, Shri Anbumani MM receiving the Silver Lotus. एक हाई ऑक्टेन एक्शन वाली एंटरटेनिंग फिल्म KGF Chapter 2, जिसमें भावनात्मक पक्ष पर भी जोर दिया गया. फिल्म का प्लस पॉइंट है स्टंट कोरियोग्राफी. And now for KGF Chapter 2, Shri Arvumani MM receiving the Silver Lotus. Shall we put our hands together, ladies and gentlemen? The film sets a new benchmark for action cinema with its meticulously crafted sequences that are both exhilarating and visually stunning. The Best Choreography Award being given to choreographer Shri Satish Krishnan, receiving Silver Lotus for the Tamil film Thiruchitram Balam. For portraying conversations through elegant choreography without either glorifying or losing the sense of the characters. सर्वश्रेष्ठ VFX सुपरवाइजर के तौर पर श्री जयकर आरुद्रा को हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए रजत कमल से नवाजा जा रहा है. प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई है. Through the breathtaking visual effects, Brahmastra tells the story of a young man, Shiva, and his mission to protect a weapon of enormous energy from dark forces. और इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ VFX सुपरवाइजर श्री विरल ठक्कर को भी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए रजत कमल का सम्मान. As we put our hands together, the film recognized for creating a utopian multiverse that seamlessly blends Indian epics and mythology together. और इसी टीम के श्री नीलेश गोरे सर्वश्रेष्ठ VFX सुपरवाइजर के तौर पर फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान. फिल्म में बेहतरीन विजुअल इफेक्ट से एक आदर्श मल्टीवर्स यानी ब्रह्मांड की रचना की गई, जिसमें भारतीय महाकाव्य और पौराणिक कथाओं को भी निर्बाध तरीके से जोड़ा गया. An award for the Best Lyrics Award being given to lyricist Shri Naushad Sadar Khan for receiving Silver Lotus for Haryanvi film Fauja. गीतकार नौशाद सदर खान ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे शहीदों के जज्बे को अपने गीत में शब्दों के माध्यम से बखूबी पिरोया है. On to the next much-awaited award for the Best Music Direction Background Score goes to Shri A.R. Rahman, receiving Silver Lotus for the film Ponniyin Selvan Part 1 in Tamil. The visionary Indian composer presents an audacious blend of traditional contemporary musical styles that suspense audiences in a continuous state of mystery and adventure. And that's not saying enough for Shri A.R. Rahman. A.R. Rahman के लिए ये 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार. 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार. जोरदार तालियां. Award now for the Best Music Direction Songs being presented to Shri Preetham, receiving Silver Lotus for the film Brahmastra Part 1 Shiva in Hindi. मौलिक रचना, शानदार संगीत और युवाओं को जोड़ने वाली आधुनिक शैली का संगीत श्री प्रीतम को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार.
सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले लेखन के लिए हिंदी फिल्म गुलमोहर की डायलॉग राइटर मिस अर्पिता मुखर्जी को रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। 2 मंजिलों का घर तो बन गया, कमरे भी बढ़ गए, पर इस एक घर में न जाने कब हम। Gulmohar makes a special mark with its dialogues that reverberate with intangible silences to make up an extraordinary world. फिल्म गुलमोहर के नाम ये 30वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सम्मानित अतिथिगण। और अब मैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से विनम्र आग्रह करते हुए उन्हें संबोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं। माननीय मंत्री जी। Namaskar. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, my colleague Minister Dr. L. Murugan ji, Secretary Jaju ji, Chairpersons of the juries, Shri Rahul Ravel ji, Shri Neelamadhav Panda ji, Shri Gangadhar Mudliar ji, Dada Saheb Phalke Awardee, हम सब के चहेते मिथुन दा, jury members, all the award winners, friends from the media and esteemed guests. There are so many famous personalities sitting here. How many can I acknowledge? मैं प्रयास करता हूँ करण भाई का I acknowledge you, I acknowledge प्रसून भाई, प्रसून जोशी जी, शर्मिला जी, मणिरत्नम जी, रहमान जी, Vajpayee ji. There are so many of the stars present here. I welcome you all to this great National Film Award ceremony. It's truly an honor to be a part of this prestigious National Film Award ceremony. My heartfelt congratulations to all the award winners, artists, technicians, and all stakeholders in the film industry. You have made outstanding contributions to the world of entertainment. And special thanks to the members of the jury, esteemed members who ran a very objective selection process. My heartfelt congratulations to Mithun da for being honored with the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Dada, your life is your message. You have made extraordinary contributions to cinema. Your contribution to society and your role as Member of Parliament are all exemplary. You are truly an icon for our society, both on the screen and off the screen. These National Film Awards celebrate the hard work and brilliance of filmmakers. Every exceptional film is the result of great teamwork. It involves actors, directors, cinematographers, VFX artists, sound designers, editors, and many more stakeholders. This collective effort creates the magic of cinema. Many of the films honored today were initiated during the COVID pandemic period. These films showcase the resilience of our society, resilience of our country. 9 debut directors are recognized for their bold storytelling. Our young innovators, whether in the film industry or startups, are driving the creative ecosystem. और साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने क्रिएटिव इकोनॉमी को पहचाना और रिकॉग्नाइज किया, और अभी कुछ ही महीनों पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी की थी दिल्ली में, जिसमें जो नए क्रिएटर्स हैं, जो एक नए तरीके से दुनिया में भारत की एक नई पहचान बना रहे हैं, भारत के कल्चर को, म्यूजिक को, फूड को, बहुत सारे अलग अलग जगह के ट्रेडिशंस को जो दिखा रहे हैं, उन सब क्रिएटर्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सम्मान दिया था कुछ ही महीनों पहले। और मैं आपके सामने ये विषय रखना चाहूँगा
कि मोदी जी की सरकार और विशेषकर इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में इस क्रिएटर इकोनॉमी को एक नया आयाम देने के लिए संकल्पबद्ध है। इस नए मीडियम से जो डाइवर्स टैलेंट है हमारे देश का, सबसे पहला वेव्स अवार्ड कुछ ही महीनों बाद में दिया जाएगा। उसकी सारी डिटेलिंग आप सबके सामने रखी जाएगी और इसके लिए जो 25 चैलेंजेस लॉन्च किए गए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उसमें। बाय नाउ मोर देन 5,000 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑलरेडी registered for participation in the Creators Economy Challenges launched for WAVES program. We also understand the employment potential of this new economy. इस नई क्रिएटर्स इकोनॉमी की जो रेल्स है, these rails have been set up in the Digital India program. The rollout of 5G, the rollout of fiber, the way our technology journey has happened in the last 10 years, that has set the big rails for very strong rails for this new economy. And now the soft skills will be set up in a very innovative way. Just recently, Honorable Prime Minister approved the first National Center of Excellence. Imagine our entire technical ecosystem was created by institutions like IITs, IIITs. Our managerial ecosystem was created using the IIMs. These are the institutions which have developed some of the finest technical and managerial talent in the world. Many of these talented alumni of IITs are leading global companies like Google, like Microsoft, and now we need to create similar institutions for the creative economy. So we will be launching the first Indian Institute of Creative Technologies, IICT. And where else should it be except Mumbai? It has to be in Mumbai, right? Amchi, Mumbai. That's the cultural capital. That's where the creative energies are so well established. That's where the first IICT will be established. The Maharashtra government has already given land for it. The lease agreement is under signature by the Secretary of INB Ministry and the Maharashtra government. So very soon the first IICT will be started, and like many IITs that have created a great educational ecosystem for the country, there will be many IICTs throughout the country which will be like IITs, like IIITs, like IIMs and like AIIMS. They will be the centers of excellence. They will create the talent pool which will serve not only our country but also win over the media and entertainment world, throughout the globe. Friends, our government is working on developing the film industry with a three-pronged approach. The first approach is talent development. And we know the world is changing very fast. We need talent. I watched the movie Kantara. So much technology is used in it, right? I watched the movie RRR. It's like movie which is driven by technologies, which is driven by creative technologies. So this is the latest trend. I'm told, I'm new to I understand the film industry very little. So my friends and the professionals tell me that today practically 40% of a movie is technology, creative technology behind it. So let's create a talent pool. Let's create a talent pipeline which becomes the best talent in the world, like our semiconductor talent, like our IT talent, like our design talent. Similar talent we create in the film industry. So first pillar of our strategy is creating a very strong talent pipeline. So talent is the first pool, first pillar, first prong of our strategy.
and IICTs will play a very big role in that. The second pillar is infrastructure. We all know that creating a good film, developing that magic, requires a very different type of infrastructure. And we have seen the power of some of the old and very prestigious film studios which created wonderful movies in the gone by years. Time has come when we create a new infrastructure which can be equated with the best in the world. And that is the second challenge we have taken as part of our strategy. And I will request the entire industry, the stalwarts of this industry, to come forward, give your ideas, share your thoughts, help us design a new infrastructure which will really create a foundation for a very vibrant film industry in the coming years. The third pillar is all about simplification. The third pillar of this strategy is about simplification. You have seen how much simplification has happened in the business world, in so many different sectors. Now time has come when somebody who wants to do a film, make a film on using railway as the background, or some very nice archives or some nice archaeological places in the background, or some forest in the background, the permissions must become very simple. The permissions must become simple. It must become very easy for the creative economy community to be able to go out and set up the sets and start creating, start weaving that magic. So the third big focus will be about creating structures, creating institutions which help you get all the permissions in a very simple way. So developing talent, developing infrastructure, and simplifying the processes. These will be the three pillars around which we will develop the film industry, and we are very open-minded government. We request all of you to please come forward with your ideas and thoughts, and we'll work together, friends. Finally, I would like to say, film heritage and many of the films which were created in the past, we really need to preserve it. So recently we had a very interesting, very important meeting in Mumbai, and we have taken some very important decisions. Prasoon Bhai was part of that meeting. We have taken those decisions to make sure that each and every part of our heritage is very well preserved. The films, the posters, the equipment which were used and in those times, the newspaper clippings which came during those times, we must preserve all that, because that's a very valuable treasure which cannot be created again. We'll create new heritage, but we must protect what we have already created. So friends, with these words, I would like to once again congratulate all the winners, and I request the film, media and entertainment world to come together and work with us. Together, we will take our media and entertainment industry to new heights. The blend of tradition and modern storytelling will keep our culture thriving and inspire the generations to come. Thank you very much. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, friends, taking the special evening forward, I once again request Honorable President and distinguished guests to come forward so to confer the next set of awards for feature film category. The award for the best makeup goes to Shri Somnath Kundu for the Bengali film Aparajito, receiving the Silver Lotus. You can see in the visuals an inspired and imaginative makeup that brings characters come alive on screens. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for the artist. प्रोस्थेटिक मेकअप के लिए मशहूर श्री सोमनाथ का ये पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है.
सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मिस निकी जोशी। गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए आप प्राप्त कर रही हैं रजत कमल का सम्मान। स्टोरी नहीं खबर था મને बढ़ते हूँ चलाओ શું हाँ बाई આ ભાઈઓનું કામ નહીં લે બુલેટ તને ખબર પડે Kutch Express has taken great care to incorporate the minute intricacies of the folk world of Gujarat in its costumes. सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार बंगाली फिल्म अपराजितों के लिए श्री आनंद आध्या को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। We have never seen a movie like this. In the film, you witness a lifelike ambience and meticulous handling of various visual components that bring the era alive on screen. जीवंत माहौल विभिन्न दृश्य तत्वों के कुशल प्रबंधन के लिए पर्दे पर उस युग को जीवंत करते हैं। सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग का अवार्ड मिल रहा है मलयालम फिल्म आटम को। श्री महेश भुवनेंद्र प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। The remarkable use of silences and its control over the film space at the same time shows the maturity of the editor in the film. मान्यवर बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए तमिल फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 चयनित की गई है और साउंड डिजाइनर श्री आनंद कृष्णमूर्ति रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे हैं। के साथ साथ मौन का साइलेंस का कुशल समन्वय चोल साम्राज्य को जीवंत कर देता है। फिल्म ने वर्ष 2022 की लिस्ट में सबसे अधिक 4 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। The award for the best cinematography goes to Shri Ravi Varman for the film Ponniyin Selvan Part 1, being awarded with Silver Lotus. Aditya Karikalan Indaneram. Exotic visuals, captivating frames, angles and movements lend the script a poetic appeal that we witness on the screen. सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार पा रही हैं मलयालम फिल्म साउदी वेलक्का CC.225/2009 के लिए मिस बॉम्बे जयश्री रामनाथ। आपको रजत कमल का सम्मान। शास्त्रीय गायन की विलक्षण प्रतिभा से सजी आवाज जो गीत की भावुकता को भी समेटती है और जीवन संघर्षों को नए अर्थ भी देती है। 40 years of Srimati Bombay Jayashree. Let's put our hands together, ladies and gentlemen, with all the energy we can. पुरस्कारों के क्रम में सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार पा रहे हैं श्रीपत पीके, जिनका आज जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मलयाली फिल्म मलिकापुरम के लिए बाल कलाकार श्रीपत पीके को रजत कमल। Happy birthday, Shripat. The adventure of a small boy with a sense of humor, courage, timidness, and lively performance that touched the chord with all the viewers. सबसे छोटी उम्र के अवार्डी के लिए सबसे अधिक तालियां। An award now for the best actress in supporting role conferred to Miss Neema Gupta for the film Unchai, being awarded the Silver Lotus. ये सेटिंग किसी ट्रैवलिंग कंपनी की है या प्राइवेटली तुम्हारी? जिंदगी भर तुम्हारे लिए जीती रही।
नीना गुप्ता ने अपने अभिनय कौशल से मानवीय रिश्तों के ताने बाने को संवेदनाओं की गहराइयों से जोड़कर बखूबी प्रस्तुत किया है इस फिल्म में और हासिल किया है अपना तीसरा नेशनल फिल्म अवार्ड। And now the Best Actor in Supporting Role Award. The award goes to Shri Pavan Malhotra for the film Fauja, being recognized with Silver Lotus. मेरी 10 पुश्तों ने भारत माँ की सेवा की है। मैं एक अभागा हूँ सर जी, और कोई नहीं करना चाहता। अपने बेटे को सेना में भर्ती कराने की इच्छा रखने वाले पिता के देश प्रेम को पवन मल्होत्रा ने पर्दे पर जीवंत कर दिया अपने अभिनय से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए प्राप्त कर रही हैं मिस मानसी पारेख गोहिल। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिल रहा है कच्छ एक्सप्रेस को ही और फिल्म की निर्माता भी हैं मिस मानसी पारेख गोहिल, जो ग्रहण कर रही हैं 2 पुरस्कार। आपको रजत कमल का सम्मान। રિસર્ચ પણ તમારી જોડે આખી દુનિયાએ જોઈશ આને ડ્રીમ કેચર કહેવાય. આ તારા સપના પૂરા કરવામાં તારી મદદ કરશે. જે મારા ભૂલે છે. The filmmaker is recognized for delicately illustrating the character of a suppressed housewife brimming with immense hope and untapped talents. The Best Actress in Leading Role now goes to Miss Nithya Menon for Tamil film Thiruchitram Balam, being conferred the Silver Lotus. చిన్న వయసులో మీ ఫ్రెండ్ Miss Menon being recognized for her skillful portrayal of character, sacrificing her own love for greater good, capturing the sense of selfless devotion. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार हिंदी फिल्म ऊंचाई के लिए प्राप्त कर रहे हैं श्री सूरज आर बड़जात्या। आपको स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस का सम्मान। एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैक दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रैक में से इस प्रेरणादायक फिल्म में श्री सूरज आर बड़जात्या ने एवरेस्ट बेस कैंप की प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ कुशल संपादन, मजबूत पटकथा और भावुकतापूर्ण दृश्यों के माध्यम से बेहतरीन निर्देशन प्रस्तुत किया। Shri Suraj Bajapia occupies a shining spot in the history of Indian cinema. Time now for the best film in animation, visual effects, gaming and comic category. The award goes to Hindi film Brahmastra Part 1 Shiva. Shri Karan Johar receives the Golden Lotus Award on behalf of Dharma Production Private Limited, Star Studios, Prime Focus Limited and Starlight Pictures. क्यों जुड़ा हूं मैं गुरुजी इस अस्त्रों की दुनिया से, क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र। ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी वीएफएक्स प्रस्तुतियों में से एक। फिल्म में 4,500 से अधिक वीएफएक्स इफेक्ट्स थे, जो संभवतः विश्व स्तर पर किसी फिल्म में सबसे अधिक वीएफएक्स का रिकॉर्ड था। And for the film Best Film in AVGC category, award goes to director Shri Ayan Mukherjee for the Hindi film Brahmastra Part 1 Shiva, being awarded the Golden Lotus. The filmmaker being recognized for creating a utopian multiverse that seamlessly blends Indian epics and mythology together. राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों का प्रोत्साहन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार कच्छ एक्सप्रेस के नाम। फिल्म के निर्देशक श्री विरल शाह को रजत कमल। आशु Johnny the Caterpillar. Any story नहीं खबर था मैंने? Caterpillar. पेट में पानी हलती नहीं। गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस परिवार को केंद्र में रखकर एक महिला का संघर्ष और उसकी सफलता की कहानी को संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है।
Award now for the best popular film providing wholesome entertainment goes to Kannada film Kantara. Sri Vijay Kiragandur on behalf of Ombale Films LLP receiving the Golden Lotus. रिव्यूअर सज्जनों, होम्बाले फिल्म्स के लिए ये दोहरी खुशी है क्योंकि फिल्म कांतारा और KGF 2 दोनों ही इनकी दोनों प्रोडक्शंस को मिले हैं दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। And staying with Kantara, I invite the director of the film, Rishabh Shetty, to receive the Golden Lotus. He also receives the award for the best actor in leading role. कांतारा एक दिल छू लेने वाली फिल्म जो दमदार तरीके से धार्मिक मान्यताओं के भीतर गढ़ी कहानी के माध्यम से दिलों को जोड़ती है और बंद विचारों की खिड़की भी खोलती है। ऋषभ शेट्टी, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है और साथ ही कांतारा के निर्देशक के तौर पर भी ग्रहण किया पुरस्कार। Ladies and gentlemen, all great journeys begin with a debut. The Golden Lotus Award for the best debut film of a director being conferred to Shri Pramod Punhana for the film Fauja. निर्देशक प्रमोद पुन्हाना ने अपनी पहली ही फिल्म से अपनी काबिलियत साबित की। एक परिवार की सेना में शामिल होकर देश सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने के प्रयासों को आपने शिद्दत से इस फिल्म में प्रस्तुत किया और बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म आटम को मिल रहा है। फिल्म निर्माता जॉय मूवी प्रोडक्शंस LLP की तरफ से श्री अजीत जॉय के स्वर्ण कमल का सम्मान प्राप्त करते हुए The film Autumn explores the ugly facades of society through a crime against one of the women performers in a theatre group, a play of empathy, love, jealousy, anger, remorse, and quest to remain ahead. And the award for the best screenplay original also goes to Malayalam film Autumn. Director and screenplay writer Sri Anand Dekarshi been conferred with Golden Lotus. An intentionally simple narrative that skillfully unravels a complex web of deceit, all within the confines of a small, intimate setting. आटम एक रंगमंच समूह की महिला कलाकार के खिलाफ हुए अपराध के माध्यम से समाज के एक कटु पहलू की पड़ताल करती है। At this point, thank you, Honorable President, for presenting the awards. मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने का। इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं हम सबके चहेते, ख्यातिलब्ध एवं प्रतिष्ठित अभिनेता, पद्म भूषण से सम्मानित श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। हिंदी सिनेमा में आपके अतुल्य योगदान के प्रति सम्मान है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। Ladies and gentlemen, Sri Mithun Chakrabarti is here as we move on to the presentation of this much-awaited Dada Saheb Phalke Award. Let's play a short film that takes us through the life and times of the icon of Indian cinema. The fans like us call him Mithunda. बंगाल की जीवंत गलियों से मुंबई की चकाचौंध तक का ये सफर एक कहानी है गौरांग चक्रवर्ती की बुलंदियों तक पहुंचने की, जिनको देश और दुनिया मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानती है। Gauranga is my birth name, but then from the college side, I was a very popular guy. They used to call me Mithu, Mitas and Mithas, Mitas and Mithun. The sweetest, sweetest is Mithun. 1976 में फिल्म इंडस्ट्री में आए मिथुन को अपनी पहली फिल्म मृग्या में बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तुमको भी शिकार पसंद, मुझको भी शिकार पसंद।
तुमको देना अच्छा लगता है, तो शिकारी है ना। लेकिन उनके स्टारडम को इंतजार था 1982 का, जब रिलीज हुई डिस्को डांसर। इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को कमर्शियल सिनेमा में स्थापित किया। चलिए डिस्को डांसर फर्स्ट वीक में इंडस्ट्री में उसको फ्लॉप करा दी, क्योंकि ये किस किस्म का डांस है भाई, यू नो ऑल दिस दे थॉट कि समथिंग वेग डांसिंग, बट आई एम इंट्रोड्यूसिंग डिस्को दैट वाज बियॉन्ड देयर थिंकिंग एंड इट वेंट ऑन टू बिकम अ लेजेंड नाउ। मिथुन ने अपने उस दौर के सभी बेहतरीन अदाकारों के साथ काम किया। उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता था एंड ही इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, वेरी हेल्पफुल पर्सन। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। प्यार झुकता नहीं जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सिलसिला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि 1991 में आई फिल्म अग्निपथ ने उन्हें एक और नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इसको रखो दोस्त, तुम्हारा 325 रुपया। 10 वाले तुम्हारा का। ये पहले वो हीरो थे जो बंगाल से आए, इनको कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं मिला था, और फिर उन्होंने जब पहली बार एक कमर्शियल फिल्मों में मौका मिला तो उन्होंने एक अपना यूनिक डांस का स्टाइल इंट्रोड्यूस किया, एक्शन का स्टाइल इंट्रोड्यूस किया। तो ही वॉज दिस टॉल डार्क हैंडसम हीरो। एक लड़के को आप रास्ते में आते जाते आप उनके कॉम्प्लेक्शन के बारे में मजाक उड़ाए, उसका जो दर्द है वो आप ऊपर से नहीं दिख पाएंगे। फिर एक दिन सोचा कि क्या करें, मैं रंग तो बदल नहीं सकता, तो मैं सोचा तो मैं तो डांस करता हूँ, मैं पैर से डांस करूँगा, और ऐसा पैर से डांस करूँगा कि लोगों की नज़रें मेरे पैर के सिवा ऊपर न दिखे, मेरे रंग पे ना जाए, और वही मैंने किया। फिल्मों के अलावा मिथुन दा ने टेलीविजन और OTT प्लेटफॉर्म्स में भी अपना जलवा बिखेरा है। जिस तरीके से उन्होंने डांस के जरिए अपना एक नाम बनाया, एक पहचान बनाया, आई फील इन अ वे ही वाज द बेस्ट महागुरु फॉर अस। मैं सबको बोलता हूँ खुद सो जाना, लेकिन सपने को सोने नहीं देना। मैं खुद सो जाता था, लेकिन मेरे सपने को मैं कभी सोने नहीं दिया। मिथुन दा को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। रूल ढुकैया ढुकैया ढोल ढोला कोई नहीं से जगाटा। गुरु भाई के बारे में तुम्हारी क्या राय है? स्वतंत्र होके बोलो, स्वतंत्र होके। मिथुन दा भारत के अलावा रूस, जापान और कई अन्य देशों में भी बहुत पॉपुलर रहे हैं। Mithun Chakraborty, the bright superstar of Indian cinema, is extremely famous not only in India, but also, of course, in Uzbekistan. Films with his participation are watched with great love by Uzbek cinema fans. We most sincerely congratulate Mithunji on being honored with the highest award in Hindi cinema, the Dada Saheb Phalke Award. Jimmy, Jimmy, acha, Jimmy. Mithun Chakraborty, this is an incredible person. His achievement to unite both nations, because you know, after 30 years of when his movies came to our country, we still remember them, and those memories warm our hearts, and this memory also brings our nations together. In Kazakhstan, in other countries, I hope everybody know about Jimmy Jimmy. Yes. When I was kid, when I was child, I sing this song so many times. Jimmy Jimmy, aja aja. मिथुन दा को सन 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और आज फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। We love you. You will always remain our Tarana. You will always remain our disco dancer. दादा आपको एक बहुत ही डिजर्विंग दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बहुत बहुत बधाई। ये किताब जो आपको मिला है, ये बनता है आपके लिए, and a grand salute to you for your achievement. Mithun Chakraborty is, I would say, the best choice today for the Dada Saheb Phalke Award. मूवी इंडस्ट्री के डांसिंग सुपरस्टार मिथुन दा, देवी और सज्जनों, अब मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए आगे पधारें। और अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका
हम सबको बहुत बहुत इंतजार था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है, हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। देवी और सज्जनों, और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित, हर दिल अजीज, सादगी भरा व्यक्तित्व, संतुलित गहरे भाव अभिव्यक्ति के साथ विलक्षण अभिनय प्रतिभा के धनी, डांसिंग सुपरस्टार रहे मिथुन दास। A standing ovation is most deserving of the film icon that Shri Mithun Chakravarti is. Being awarded for his never say die spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages, realizing most importantly the dream of the common man rising above ordinary to reach unfathomable heights of stardom. Mithun Chakravarti, ladies and gentlemen. आम आदमी के सामान्य से ऊपर उठकर स्टारडम की ऊंचाइयों को छूने के सपने को साकार करने के लिए लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान, दिल में खुशियां भरने के लिए आदरणीय मिथुन दा को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का सम्मान। आपको ढेरों शुभकामनाएं मिथुन दा। Thank you very much. Thank you, Honorable President. I now request Shri Mithun Chakravarti to share his thoughts with us, sir. सबसे कठिन काम, अवार्ड दो, चले जाओ घर, ताली मारेंगे, आप बोलेंगे स्पीच भी दो। माय गॉड, डायलॉग दे दे तो कितने आसानी से पढ़ लेता हूँ, बोल देता हूँ। आप क्या, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, क्या बोलूँगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माय रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट, my respected minister and all the best people, respected people on dais, respected people in the audience and my colleagues, बस इतना ही कहूँगा कि इस मंच पर मैं पहले 3 बार आ चुका हूँ आप लोगों की दुआ से। लेकिन सबसे पहली बार जब मिला था नेशनल अवार्ड, उसके इतने किस्से हैं, कुछ किस्से मैंने बताए, कुछ किस्से मैंने बताए नहीं। तो मैंने सोचा ये दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल टेल यू दैट आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड व्हाट हैपेंड टू मी। वेल, आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट नेशनल अवार्ड तो नेचुरली लोगों के कहने लगे कि यो माय गॉड, यू नो यू गॉट नेशनल अवार्ड। तो मेरा ब्रेन थोड़ा खराब होने लगा था, थोड़ा कि कुछ बहुत कुछ बड़ा कुछ कर दिया हूँ। एनीवेज, उस समय फिर कहा गया बॉम्बे लैब था, तो वहाँ एक स्क्रीनिंग रखा गया कि जिसमें मेगा देखने के बाद अगर पसंद आए तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो मैं भी पहुँच गया। आई थॉट के आफ्टर सीइंग द फिल्म दे मे लाइक मी, दे मे टेक मी। After seeing the film, I can't take his name because he's no more. Because he's no more, I'm saying this because before that he was alive. If I would have said, so you would have understood कि मेरे कोई बोल रहा है ये। तो इसीलिए आज तक बोला नहीं, पहली बार बोल रहा हूँ कि स्वर्ग लोग चले गए हैं। तो after finishing the film, बाहर आए तो I was walking along with him and I asked him, sir पिक्चर कैसी लगी? बोलते बेटा पिक्चर अच्छी लगी, तुम भी कमाल के एक्टर हो, लेकिन तुम कपड़े पहन के कैसे लगोगे? मैं 1 मिनट के लिए चौंक गया कि मैं उनके सामने बगैर कपड़े के खड़ा हूं। क्यों सवाल किया? बाद में याद आया, ओ मैंने जो रोल किया था वो एक आदिवासी का था जिसमें ऊपर मेरे कपड़े ही नहीं थे, तो इसीलिए सोच रहे थे कपड़े पहनने के बाद ये कैसा लगेगा, तभी इसको फिल्म में लूंगा। सेकेंड इंसिडेंट हुआ, ये नेशनल अवार्ड मिलने के बाद दिमाग तो खराब हो ही गया था। मैं अपने आप को एल पचिनो सोचने लगा। रियली मैं सोचा था मैं कुछ कमाल कर दिया, तो मेरे सारे एटीट्यूड चेंज हो गए। मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाके आके
ऐसे बैठता था, कभी कभी यूं करता था कि प्रोड्यूसर मुझे दिखता था क्यों कर रहा है ये सब, और उसको नहीं मालूम था कि मैं अल पचिनो की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं पूछता था कि एक काम करना, वो फिल्म की स्टोरी मेरे घर में भेज देना। फिर एक तीसरा प्रोड्यूसर को लगा ये कुछ जबरदस्त, मारा एक लात मुझे, बोलने निकल यहाँ से। उस दिन से मैं एल पाचिनो से गालपाचिनो हो गया। मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई, अब मेरे को कोई काम वाम नहीं देगा, क्योंकि द बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे साथ जो था, एक्टर तो सबने मान लिया था बिकॉज ऑफ माई कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि लोग बोलता था अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में ये काला रंग नहीं चलेगा तो तुम क्या कर रहे हो इधर, तुम वापस जाओ। तो मैं रास्ते में जाता था, ये कालिया, जितने जितने हो सके आप, यू कैन अंडरस्टैंड, अपमान जितना हो सके। तो मैं सोचने लगा मैं करूं क्या। मैं भगवान से पूछता था कि भगवान कि मेरा ये रंग तू चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नहीं चेंज कर सकता था भगवान। तो मैं सोचने लगा करूं क्या। तो मैंने सोचा तो मैं तो डांस कर सकता हूं, तो मैं डांस कर सकता हूं, तो मैं ऐसा डांस करूं मेरे पैरों से, ताकि लोग मेरे पैरों को देखे, मेरे स्किन को ना देखे, मेरे कलर को ना देखे। और मानिए मैंने एग्जैक्टली वही किया। आप मेरी फिल्म देखिए, सब फिल्मों में पैरों से डांस किया, पैर को थिरकने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया कहीं भी। और लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से, बहुत, क्योंकि मैं माई लाइफ इज नॉट ऑन प्लेटर। जो कुछ भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके मिला है। आई डिडंट गेट इट जस्ट लाइक दैट। तो मैं भगवान से कहता था तूने नाम दिया, शोहरत दी, फिर इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, हर चीज में क्यों तकलीफ। बहुत शिकायत करता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा तरीका नहीं था। आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैं शिकायत करना छोड़ दिया। मैंने कहा थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू बूढ़ो शिव, थैंक यू दानी बाबा, थैंक यू भद्रो लोग। कलकत्ता में निमतौला से एक पुराना सा मंदिर है, जहाँ एक 10 फीट ऊंचा एक शिवलिंग है, जहाँ सीढ़ियों से चढ़ के जाके पानी देना पड़ता है। मैं कितने साल मुझे याद नहीं, मैं उनकी सेवा किया। तो उनको मैंने कहा थैंक यू, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे सूद के साथ सब कुछ वापस कर दिया है। मुझे मालूम है अगर ये मैं नहीं कहूंगा तो यहाँ जितने हैं, यहाँ जो सारे हैं ना बैठे हुए इधर, इन लोगों ने कहा कि दादा आपको जो कुछ भी कहे, लेकिन आपको ये कहना जरूरी है कि जो यंग लड़के लोग आ रहे हैं फिल्म लाइन में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में बहुत से टैलेंट है, बहुत से टैलेंटेड लड़का लड़की, लेकिन पैसे नहीं है उनके पास मेरी तरह, दे डोंट हैव मनी। लेकिन मैं उनको कहूंगा हिम्मत नहीं हारना, पैसा नहीं भी हो हिम्मत नहीं हारना, और सपना जरूर देखना, सपना जरूर देखना, लेकिन इतना याद रखना खुद सो जाना, लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना। क्यों? इसलिए अगर मैं बन सकता हूं तो तुम सब बन सकते हो। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद। अति सम्मानीय मिथुन दा, आपके हृदय स्पर्शी उपकारों के लिए आपका आभार। आपको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। लगभग 5 दशक का आपका फिल्मी सफर, भारतीय सिनेमा में आपके योगदान को सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सविनय निवेदन करती हूं कि कृपया अपने सुवचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आज के इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उपस्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण एवं सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि बहुत सी फिल्में पर विचार करने बाद आज की पुरस्कृत फिल्में चुनी गई है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन एवं समीक्षा के लिए भी अनेक पुस्तकों और समीक्षकों का आकलन किया गया है। इसके लिए मैं निर्णायक मंडल के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ। किसी भी फिल्म को बनाने में बहुत से लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। आज के पुरस्कार विजेताओं की टीम के सभी सदस्यों को भी मैं बधाई देती हूँ। अनेक भाषाओं और देश के सभी क्षेत्रों में बनाए जा रही फिल्मों के आधार पर भारतीय सिनेमा विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। साथ ही ये सबसे अधिक विविधतापूर्ण कला क्षेत्र भी है। पूरे देश में फिल्म उद्योग के सभी आयामों से जुड़े लोगों की मैं सराहना करती हूँ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी मिथुन चक्रवर्ती जी को मैं विशेष बधाई देती हूँ। स्वाधीनता सेनानी तथा ओडिया भाषा के प्रसिद्ध लेखक भगवती चरण पाणिग्राही द्वारा लिखित एक कहानी शिकार हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था। उस कहानी में न्याय और अन्याय को अपनी सरल और सहज दृष्टि से देखने वाले भोले वाले आदिवासी युवक घेनुआ का मार्मिक चरित्र मेरे मन में आज भी अंकित है। मिथुन चक्रवर्ती जी ने अपने पहली ही फिल्म मृगया में उस अनोखे चरित्र को जीवंत बनाया तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार पर सम्मानित हुए। अब तक लगभग 5 दशकों की अपनी कला यात्रा के दौरान मिथुन जी ने गंभीर चरित्रों के पर्दे पर उतारने के साथ साथ सामान्य कहानियों को भी अपनी विशेष ऊर्जा से सफलता प्रदान की है। उनकी लोकप्रियता का दायरा अन्य देशों तक तो फैला हुआ है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि ये समाज कल्याण के अनेक कार्यों में संलग्न है। इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत सराहना करती हूँ और बधाई देती हूँ। आज के कुल पुरस्कार विजेताओं की संख्या 85 से अधिक है, लेकिन महिला पुरस्कार विजेताओं की संख्या केवल 15 है। मैं शिक्षण संस्थानों के कई कन्वोकेशन फंक्शंस में जाती हूँ। अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थान में पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या छात्र से अधिक होती है। ऐसे ही बदलाव रोजगार और उद्योग जगत में भी होना चाहिए। फिल्म उद्योग द्वारा वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में और अधिक प्रयास किया जा सकता है। मैं मानती हूं कि फिल्में और सोशल मीडिया समाज को बदलने का सबसे अधिक मजबूत माध्यम है। लोगों में
जागरूकता पैदा करने के लिए जितना असर उन माध्यमों से पड़ता है उतना किसी और माध्यम से संभव नहीं है। मैंने आज पुरस्कृत की गई फिल्मों के संक्षिप्त विवरण पर एक निगाह डालना चाहती हूँ। मैं बहुत सी फिल्में से प्रभावित हुई हूँ, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कुछ ही फिल्मों का उल्लेख कर पाना संभव हो रहा है। इन पुरस्कृत फिल्मों की भाषाओं और परिवेश भले ही अलग हो, सभी फिल्मों में भारत की झलक मिलती है। इन फिल्मों में भारतीय समाज के अनुभवों का खजाना है। इनमें भारत की परंपराएं और उनकी विविधता सजीव हो जाती है। हमारी फिल्में हमारी समाज के कलाबोध को प्रदर्शित करती है। जीवन बदल रहा है, कला के प्रतिमान बदल रही है, नई आकांक्षाएं जन्म ले रही है, नई समस्याएं सामने आ रही है, नई जागरूकता भी पैदा हो रही है। इन सभी बदलावों के बीच आपसी प्रेम, करुणा और सेवा के कभी न बदलने वाले जीवन मूल्य आज भी हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को सार्थक बना रहे हैं। ये सभी बातें आज पुरस्कृत हुए फिल्म में देखी जा रही है। नई फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार फ्रॉम द शैडोज नामक फिल्म के लिए दिया गया है। अपने आतिथ्य और गरिमा के लिए अनेक समस्याओं में लड़ती हुई महिलाओं के संघर्ष और पर आधारित ये फिल्म चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गंभीर समस्या को उजागर करती है। ये समस्या बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ऐसी फिल्में समाज को जगाती है और रास्ता दिखाती है। देवियों और स्वजनों, असम की सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिरुवाला राभा ने डायन लांछन जैसे अंधविश्वास के विरुद्ध दृढ़ता से मुकाबला करके एक सामाजिक बुराई को दूर करने में असाधारण योगदान दिया है। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए जंगल में शरण लेना पड़ती है। समाज को जागरूक बनाने तथा पीड़ितों को सहारा देने के लिए उनके असाधारण योगदान हेतु उन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनकी प्रेरक जीवन गाथा पर आधारित असमिया भाषा में बनी बिरुवाला विश टू पद्मश्री जैसे फिल्में अनकही कहानियों को लोगों तक पहुंचाती है। सर्वश्रेष्ठ वाली फिल्म दमन का संदेश भी अत्यंत प्रेरक है। एक युवा डॉक्टर द्वारा जनजाति बहुल गांव में अनेक संकटों का सामना करते हुए लोगों की सेवा करने का असाधारण उदाहरण सभी के लिए अनुकरणीय है। निस्वार्थ संघर्ष, सेवा और करुणा के जीवन मूल्यों के पर आधारित समाज जो दूर आगे बढ़ेगा, ये उनका संदेश था। सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कच्छ एक्सप्रेस की पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ। महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों को दूर करने में कच्छ एक्सप्रेस जैसी फिल्में सहायक होगी यदि उनका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। ऐसी फिल्मों द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने का संदेश मिलता है। सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दी थी की कथानक ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। एक स्वाधीनता सेनानी की बहादुर बेटी ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। देश प्रेम के आदर्शों को जीवंत बनाए रखने में हमारे फिल्मों ने सराहनीय योगदान दिया है। राष्ट्र के साथ भावना के स्तर पर लगाव होने से कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाने में तथा राष्ट्र निर्माण में अधिक उत्साह के साथ अपना योगदान करेगा। हरियाणवी भाषा में बनी फिल्म फौजा के निर्देशक को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डेब्यू फिल्म की निर्देशक हेतु पुरस्कार दिया गया। भारतीय सेनाओं के प्रति गौरव की भावना से ओतप्रोत ये फिल्म हमारे सैन्य बलों का सम्मान बढ़ाए है
और हमारे युवाओं से सेना के प्रति आदर और आकर्षण भी पैदा करती है। कला और संस्कृति से जुड़ी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कन्नड़ा भाषा में बनाई गई फिल्म रंग वैभव का मिला है। कर्नाटक के मंदिरों में नृत्य कला की 2000 वर्षों से भी अधिक पुरानी परंपरा को ये फिल्म दर्शाती है। ऐसी फिल्मों हमें अपनी कला की समृद्ध परंपराओं के बारे में अच्छी जानकारी देती है तथा सांस्कृतिक गौरव का भाव भी उत्पन्न करती है। मलयालम भाषा में बनी फिल्म मालिकपुरम में उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार प्राप्त करने वाले मास्टर श्रीपद को मैं आशीर्वाद देती हूं कि वे जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। देवियों और स्वजन प्राय सार्थक फिल्मों का दर्शक नहीं मिल पाते हैं। करोड़ों रुपयों की लागत और कमाई से जुड़ी फिल्मों के बारे में ट्रेड जर्नल्स तो लिखती ही है। समाचार पत्र भी उन्हीं फिल्मों के रिव्यूज और रिपोर्ट्स को अधिक महत्व देती है। फिल्म प्रमोशन में खर्च करना फिल्म की सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक शक्ति ही फिल्म जैसी महत्वपूर्ण विधा को नियंत्रित करती नजर आती है। आज पुरस्कृत अनेक फिल्में बनाने वाला उस तरह की आर्थिक शक्ति से संपन्न नहीं है जो बड़े बजट वाली फिल्मों को आगे बढ़ाती है। इसीलिए समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और केंद्र तथा राज्य सरकारों को सार्थक सिनेमा की पहुंच को बढ़ाने के लिए मिलजुल कर निरंतर प्रयास करना होगा। मैं भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़ी सभी लोगों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Honorable President. And now may we all rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक